अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य आचार्य श्री का हमारे बीच आगमन होने जा रहा है। मेरा अनुरोध चंद्रमोहन जी से पुनः, क्योंकि आपके संगीत का जो माधुर्य है वो हम सबको रोमांचित कर देता है, तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी एक सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। मैंने तो 3-4 किताब को सुनाया। हम चाहेंगे कि हमारे अध्ययनरत विद्यार्थीगण, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी आपको एक बहुत ही सुंदर सा पद आपको सुनाएं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती गीता रामायण। आइए सुंदर से प्रसंग के साथ। निज धर्म पर चलना सिखाती गीता रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती गीता रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती गीता रामायण।
गीता रामायण सिखाती गीता रामायण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी। आज के त्रिदिवसीय कार्यक्रम में से सबसे अंतिम सत्र का कार्यक्रम है आइल ऑफ आयुर्वेदा ओमनिक्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न कंटेम्पलेशन। हम जो प्रयास करना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से आयुर्वेद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, यही इस पूरी कॉन्फ्रेंस का थीम है। और आज जैसे मैंने पहले भी बताया, हम सब का सौभाग्य है कि देश विदेश के वैज्ञानिक आज हमसे जुड़ेंगे और हम डिफरेंट थेरेपीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने साउंड वेव थेरेपी के बारे में बताया, आदरणीय अरविंद कुमार राणा जी से आज पतंजलि का बच्चा परिचित है, क्योंकि उन्होंने साउंड के जरिए जो थर्ड आई मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट अभी हमारे बच्चों के अंदर विकसित किया है, वो एक इनोवेटिव अप्रोच है। जो तीसरा नेत्र जागरण की बात करें और हमारे बच्चे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आज उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त होगा। उसके साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिक जो ऑनलाइन माध्यम से यूएस से और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। द आइल ऑफ आयुर्वेदा ओमनिक्स is a fascinating journey that revolves around the ancient wisdom of Ayurveda to the modern world of contemplation in the field of omics. Ayurveda is an ancient system of medicine that has been practiced for thousands of years. At the same time, the field of omics has been rapidly evolving with new technology, techniques and being developed to study the complex interaction between the, you can say, molecules that makes an organism. By combining the ancient wisdom of Ayurveda with the modern tools of omics, researchers are gaining a deeper understanding of the human body and its functions. For example, the bioinformatics, the in silico approach, which is practiced by our researchers in Patanjali Research Institute. For example, the evidence-based research on medicines, on Ayurveda medicines, it is an example of innovation in Ayurveda. आज हमारे बीच में भरवा सॉल्यूशंस की डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नेहा सिंह जी भी हैं, जो आज आपके सामने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को रखेंगी। आप सबको प्राउड होना चाहिए कि हमारा पतंजलि न केवल एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च का काम कर रहा है, बल्कि मॉडर्न टूल टेक्निक्स के साथ, एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड मेडिसिन के साथ आईटी बेस्ड टूल्स पे भी नवातीत अनुसंधान कर रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके जरिए हॉस्पिटल के सारे मैनेजमेंट, चाहे वो ओटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसको पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के जरिए कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है, जिसके विषय में पूरी जानकारी अभी थोड़ी ही देर में आदरणीय नेहा सिंह जी आपको देंगी। कुछ ही देर में आचार्य श्री का आगमन हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, जो बच्चे पीछे खड़े हैं वो अपने यथास्थान बैठ जाएं। डिसिप्लिन कमेटी मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट कि जितना जल्दी हो सके सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें।
सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पूज्य आचार्य श्री का आगमन हमारे बीच हो चुका है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मेरा अनुरोध आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी से कृपया मंच। प्रोफेसर बलराम जी, डॉक्टर अरविंद राणा जी, अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरा अनुरोध सभी डिस्टिंग्विश गेस्ट से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच आज आगमन हुआ है डॉक्टर रमेश वैश्य जी का, डायरेक्टर ह्यूमन एनर्जी रिसर्च सेंटर। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा अनुरोध पूज्य आचार्य श्री से आदरणीय रमेश जी को एक माला और शॉल अर्पित कर हम सब पतंजलि परिवार की तरफ से उनका अभिनंदन करें। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हमारा सौभाग्य कि आज मिसेस वीना वैश्य जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका मैम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर बलराम जी उमर, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एम्स ऋषिकेश। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संजीव कुमार जी को, प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर एट CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ PG स्टडीज, सर्जरी डिपार्टमेंट, पतंजलि योगपीठ। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय नेहा सिंह जी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, भरवा सॉल्यूशंस IT कंपनी। मैम, कृपया स्टेज पर आएं। जोरदार करतल ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री। आज हमारे बीच देश विदेश के महान वैज्ञानिक जो आयुर्वेद तथा उससे जुड़े हुए विषयों पर अनुसंधान कर रहे हैं,
वो आज हमारे साथ हैं। कुछ वैज्ञानिक हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से, यूएस से, और इसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ मध्याह्न के बाद जो सत्र है उसमें डायरेक्ट जुड़ेंगे, कुछ आएंगे। हम सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक शुरुआत के तौर पे बताऊं तो आज हम शुरुआत करेंगे भरवा सॉल्यूशन की डायरेक्टर इंजीनियरिंग आदरणीय नेहा जी से, जो HIMS सॉफ्टवेयर की जानकारी आप सबके बीच में साझा करेंगी। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय रमेश वैश्य जी, जो साउंड हीलिंग थेरेपी के विषय में आज चर्चा करेंगे। आदरणीय सचिन गुप्ता जी, जो सर्जरी चिकित्सा के ऊपर नवातीत जो अनुसंधान पतंजलि कर रहा है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। आदरणीय संजीव कुमार जी, जो बायो सिग्नलिंग के ऊपर आज उद्बोधन देंगे। मनाली जोशी जी, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो न्यू अभी इनोवेटिव्स जो रिसर्च हुए हैं उसके विषय में आपको जानकारी देंगी। यूएस से डॉक्टर मुरली कृष्णन जी आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। डॉक्टर साकेत राम जी, जिनको आयुष के डिजिटल मिशन का पितामह भी कहा जाता है, वो आज हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे और आयुष के रिसर्च पोर्टल्स के विषय में जानकारी देंगे। डॉक्टर विजय ठाकुर जी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से जुड़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर बलराम जी हैं और मध्याह्न के सत्र में प्रोफेसर RC दुबे जी, जो वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। संक्षेप में आज का दिन जो इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का समापन दिवस भी है, हम आपको आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का आज एक ऐसा हम सबको सम्मिश्रण देखने को मिलेगा जो हमारे भविष्य की रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज और इनोवेशंस के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। पुनः मैं आप सबका इस अंतिम सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। अब मेरा अनुरोध पूज्य आचार्य श्री से कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य आचार्य श्री। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि के इस पवित्र परिसर में आयोजित त्रिदिवसीय कार्यशाला का आज अंतिम दिन है। अंतिम नहीं, महत्वपूर्ण भी है। और पिछले 2 दिनों में आपने जो सुना, जो जाना, वो आपके जीवन भर के लिए स्मरणीय है। जितने भी हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक गण हैं, हमारे विद्यार्थी गण हैं और हमारे प्राध्यापक गण हैं, आप सबके लिए, क्योंकि ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, शास्त्रों में 4 विधियों का वर्णन किया गया है। तो श्रवण जो है वह पहला साधन है। जब हम गुरुजनों से पढ़ते हैं तो भी हम पहले सुनते हैं, तो सुनने के बाद में हमको लगता है कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम मनन करते हैं, फिर जब उसकी गहराई में उतरते हैं तो वह गहराई में उतरने लगता है, तो फिर वो जीवन में उतर जाता है, तब साक्षात्कार होता है। आज मंच पर आदरणीय वैश्य जी हैं, जो आयु वृद्ध होने के साथ में ज्ञान वृद्ध है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा को लेकर के बहुत सारा अनुसंधान करते हुए उसको भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का आपने बहुत ही प्रयास किया है। और आदरणीय ओझा जी भी बैठे हैं, बलराम जी जो हैं, और आदरणीय हमारे दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, बहन जी हैं, और मेरे सम्मुख भी जिनको आपने पिछले 2 दिन से सुना है। सभी विद्वज्जनों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और आप सबका प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि पतंजलि का प्रयास है हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आधुनिक विज्ञान सम्मत स्थापित करने का। यहाँ पर विभिन्न तरह की अपने विचार और मंतव्य को सुना और जाना। ये आप ध्यान रखिए कि जो ज्ञान होता है या जो विज्ञान की परंपरा होती है, कभी भी वह किसी समय काल का प्रभाव उस पर नहीं होता है तो बोध का अभाव होता है।
तो प्राचीन काल में ऋषियों ने, महर्षियों ने जिन विधाओं का आविष्कार किया, जिस विधाओं को स्थापित करने के लिए हजारों हजारों वर्ष लगा दिया, तो वो विज्ञान वास्तव में बहुत गहरा विज्ञान है। पुनरअपि वर्तमान की जो मान्यता है, मानसिकता है, उसके आधार पर भी वह सत्य है, तथ्यपरक है। यही बताने का उद्देश्य है कि यह कार्यशाला कि हम किस तरह से हम पूरी जो जिसको हॉलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, वस्तुतः देखा जाए तो हॉलिस्टिक अप्रोच तो वो आयुर्वेद ही है, क्योंकि आयुर्वेद संपूर्ण देह की चिकित्सा की ही बात नहीं करता है, मन और आत्मा के निरोग होने की भी बात करता है। तो इसीलिए वो हॉलिस्टिक है। उसको पूरा प्राप्ति के लिए हमें किन विधाओं को, किन उपायों को करना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। आज भी मैं आशा करता हूँ कि ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर आपके लिए बने। मौसम भी बहुत जैसे कहते हैं ना, विज्ञापन में आप लोगों ने सर्दी में गर्मी का एहसान तो सुना होगा। अब तो ये गर्मी में सर्दी का जो है वो हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो ठीक है, आप उसका आनंद भी लेते रहो। बढ़िया मौसम हो रहा है और ज्ञान को अपने अंदर उतारने का आप प्रयास करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सुंदर प्रयास जो PRI की पूरी टीम ने, वैज्ञानिकों ने, विप्रिया जी ने, सब ने मिलकर के किया, उसके लिए भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री। आपका मार्गदर्शन हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। अब मैं पुनः निवेदन करूंगी आदरणीय चंद्रमोहन जी से, जो सुबह से बहुत सुमधुर गीतों के माध्यम से हम सबको आह्लादित भी कर रहे हैं। मैं पुनः चंद्रमोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी एक सुंदर सा गीत, और वो गीत जो है वो आयुर्वेद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सम्मिश्रण पे ही बना है। इस बात के लिए हम चंद्रमोहन जी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो विषय का भी ध्यान रखते हैं और विषय के अनुसार अपने गीतों में बोल डाल देते हैं। आदरणीय श्री चंद्रमोहन जी। प्रगति पथ पर हम एक साथ। मानव जाति की सेवा दृढ़ संकल्प जगाएंगे। एकीकृत चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ समाज बनाएंगे। एकीकृत चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ समाज बनाएंगे। नव अनुसंधानों के द्वारा हम राष्ट्र निरोगी बनाएंगे। आधुनिक और आयुर्वेद पद्धति मिलकर अपनाएं। प्रगति पथ पर हम एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाएं। आधुनिक और आयुर्वेद पद्धति मिलकर अपनाएं। प्रगति पथ पर हम एक साथ।
प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाएंगे, शरद पुरुष के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। आधुनिक विज्ञान प्रवाहों से सबको स्वयं जगाएंगे, आधुनिक विज्ञान प्रवाहों से सबको स्वयं जगाएंगे। करके प्रयत्न हम मिलजुल इस पतंजलि के प्रांगण में आधुनिक और आयुर्वेद पद्धति मिलकर अपनाएं। करके प्रयत्न हम मिलजुल इस पतंजलि के प्रांगण में आधुनिक और आयुर्वेद पद्धति मिलकर अपनाएं। प्रगति पथ पर हम एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाएं। आधुनिक और आयुर्वेद पद्धति मिलकर अपनाएं। प्रगति पथ पर हम एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाएं। प्रगति पथ पर हम एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाएंगे। आधुनिक वैदिक पद्धति मिलकर अपनाएंगे। प्रगति पथ पर हम एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाएंगे। आधुनिक और आयुर्वेदिक पद्धति मिलकर अपनाएंगे। आधुनिक और आयुर्वेदिक पद्धति मिलकर अपनाएंगे। आधुनिक और आयुर्वेदिक पद्धति मिलकर अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने विषय के अनुसार बहुत ही अच्छा सुंदर गीत और भजन हमारे सब सामने प्रस्तुत किया। एक बार मैं चाहूंगी जोरदार करतल ध्वनि से हम पुनः अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी उनकी पूरी टीम का। आज के अंतिम दिवस के कार्यक्रम में जो प्रथम सत्र है उसका एक थीम हमने जो सोचा था और जो इसके ऊपर हम कार्यक्रम पूरा आज करेंगे, आइल ऑफ आयुर्वेदा ओमिक्स फ्रॉम एंशिएंट सिस्टम टू मॉडर्न कंटेम्पलेशन। इसके तहत मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूं आदरणीय नेहा सिंह जी को। शी इज डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग भरवा सॉल्यूशंस, currently leading the overall initiatives of developing HIMS product and care home management software. She has extensive experience of working in analytics and BI products. She is an industry veteran with a passion of learning and experiences new technology. Let's have a big round of applause for Adarniya Shri Neha Singh ji. योग, अध्यात्म एवं आयुर्वेद के सशक्त हस्ताक्षर, ज्ञान और प्रज्ञा के शलाका पुरुष, वैचारिक पराक्रम और प्रखरता के पुरोधा, परम पूजनीय आदरणीय आचार्य श्री, यहाँ उपस्थित सभी माननीय प्रबुद्ध अतिथिगण, सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इस बौद्धिक अनुष्ठान में संपूर्ण रूप से सहयोग कर सफल बनाने में लगे मेरे पूरे पतंजलि परिवार को, आप सभी को मेरा सादर नमन। भारत की समग्र सांस्कृतिक थाती में अध्यात्म और आयुर्वेद का सिरमौर स्थान रहा है। इस सदी में श्रद्धेय महाराज श्री एवं श्रद्धेय आचार्य श्री ने भारत की सनातन परंपराओं को आंदोलित किया है और दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। उनके अथक प्रयासों से भारत में स्वास्थ्य चेतना के जो नए आयाम स्थापित हुए हैं उनको आज दुनिया निहार रही है और आयुर्वेद से जुड़े जीवन मूल्यों की तरफ वापस लौट रही है। आयुर्वेद के साथ शोध और नई तकनीक का समावेश
इन्हीं मर्मज्ञों के निरंतर अनुसंधान से संपन्न हुआ है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं HMS की, जिसने भारत के सभी पतंजलि वेलनेस सेंटर्स को एक रूपता प्रदान करी है और परम पूजनीय महाराज श्री एवं परम पूजनीय आचार्य श्री के के स्वप्न को, जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक उपचार पद्धति है आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी द्वारा, उसको एक रूप करने में एक छोटा सा योगदान HMS का भी रहा है। अगर बात करी जाए कि HMS किस किस सेटअप पे में योगदान दे सकता है, तो स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल की चेन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पतंजलि वेलनेस सेंटर की ही बात करूं, जहां पे एक मेन हेडक्वार्टर है और उसके अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं अलग अलग शहरों में, भारत के हर कोने में, यहाँ पर भी HMS कस्टमाइज होकर एस्टेब्लिश्ड है। मेडिकल कॉलेज में OPD और IPD की सुविधा HMS प्रदान करता है। HMS अलग अलग मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। आपके हॉस्पिटल के साइज के हिसाब से इसके मॉड्यूल्स को प्लग एंड प्ले करा जा सकता है। अगर मेन मॉड्यूल्स की बात करी जाए तो IPD, OPD, कंप्लीट लैब मैनेजमेंट सॉल्यूशन, डॉक्टर और थेरेपिस्ट का मैनेजमेंट संभव है। जैसे कि हमारे वेलनेस सेंटर में अलग अलग स्लॉट में थेरेपीज दी जाती हैं, तो उन थेरेपीज का सही तरीके से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कंप्लीट पोर्टल अवेलेबल है। डैशबोर्ड, काफ़ी एक्सटेंसिव डैशबोर्ड और एनालिटिक्स रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम HQ मॉडल की बात करें तो किसी एक सिटी में बैठकर आप अपने अलग अलग शहरों में जो वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ की आप चाहें तो आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, आप रेवेन्यू पे नज़र रख सकते हैं। वहाँ पे जो उपचार पद्धति जो एस्टेब्लिश करी गई है आचार्य श्री महाराज श्री द्वारा, उस पे नज़र रखी जा सकती है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो वेलनेस थेरेपी हैं और डाइटरी थेरेपी हैं, उन सब का भी एक प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। अगर हम यूज़र रोल की बात करें तो अलग अलग यूज़र रोल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पेशेंट खुद अपने पैनल से लॉगिन कर सकता है, वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। सारे कंसल्टेंट, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, उनके सभी के लॉगिन्स यहाँ पे संभव हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटल का जो फ्रंट डेस्क स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है या बैक ऑफिस फैसिलिटी है, इनके सभी के यूज़र रोल्स और एक्सेस राइट यहाँ पे डिफाइन करे जा सकते हैं। इसका UI काफ़ी इंट्यूटिव बनाया गया है, ताकि एक जो कि इंटरनेट नहीं जानता या जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता, वो भी इसको सुविधापूर्वक यूज़ कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसका रिस्पॉन्सिव वेब UI बनाया गया है। उससे ये फ़ायदा है कि आपके जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, उस पर ये सुगमता से चल सकता है। इसी कड़ी में आगे ये बताना चाहूँगी कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है, पेशेंट के रजिस्ट्रेशन है, वो 2 या 3 तरीके से संभव हैं। पेशेंट चाहे तो ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकता है और डॉक्टर का स्लॉट बुक करके अपॉइंटमेंट पा सकता है। अगर वो चाहे तो कॉल सेंटर, हॉस्पिटल के कॉल सेंटर से कम्युनिकेट करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है, या फिर वो स्वयं वॉक इन के द्वारा भी अपॉइंटमेंट ले सकता है। इसी प्रकार से 2 मोड्स हैं जो कि कंसल्टेशन के अवेलेबल हैं। एक ऑनलाइन कंसल्टेशन है और एक फेस टू फेस कंसल्टेशन है। जैसा कि 2 साल पहले कोविड की जो महामारी चली है, उस टाइम ऑनलाइन कंसल्टेशन काफ़ी उपयोगी रहा है। तो घर बैठकर पेशेंट वीडियो कॉल के द्वारा, ऑडियो और वीडियो के द्वारा डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है। डॉक्टर वहाँ पे कंप्लीट उनको वीडियो से उनके सिम्टम देख सकते हैं। वो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन भी बना सकते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर सेव कर देते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के पैनल पे हमेशा के लिए अवेलेबल होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमने यहाँ पे एक यूनिक MR नंबर का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करा है। अगर आपने एक बार पतंजलि वेलनेस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करा तो आपको एक यूनिक MR नंबर मिलता है। उसका ये फ़ायदा है कि आप भारत के किसी भी पतंजलि वेलनेस सेंटर में जब अगली बार उपचार के लिए जाएंगे तो आपको जस्ट अपना नाम, मोबाइल नंबर या फिर उस MR नंबर को बताना रहेगा
और आपके पास सारे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास अवेलेबल होंगे, आपको कोई हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली एक शुरुआत है पेपरलेस सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की। ये एक स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर पेशेंट अपने घर पे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो किस सेंटर पे अपॉइंटमेंट चाहता है, किस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट चाहता है, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से अगर उसे ज्ञात है कि कौन से डॉक्टर को मुझे दिखाना है तो वो उस डॉक्टर को भी सिलेक्ट कर सकता है। वहाँ पे हमारा जो भी ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। वो डेट सिलेक्ट कर सकता है, जो अवेलेबल टाइम स्लॉट्स हैं उनको चयन कर सकता है और एक बार पेमेंट करके उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है। जब भी उसका नियत समय रहता है और दिनांक रहती है वो उस टाइम वेटिंग लाउंज में लॉगिन कर सकता है और डॉक्टर जैसे ही उनको एडमिट करते हैं लाउंज से तो एक वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाता है और डॉक्टर उसके सिम्टम देखकर, उसके बातें सुनकर, उनके डायग्नोसिस, उनके ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वो सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन जब सेव हो जाता है तो वो पेशेंट के पैनल पे, मतलब पेशेंट क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको सारे क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, वो कभी भी किसी भी समय अपने सारे पास प्रिस्क्रिप्शन को व्यू कर सकता है, अपने पास अपॉइंटमेंट को व्यू कर सकता है, तो उसे भी वो अवेलेबल रहेंगे। अगर बात करें डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के लॉगिन की तो उनको ऑडियो, वीडियो और टेक्सचुअल कम्युनिकेशन अवेलेबल रहेगा। वो अलग अलग डायग्नोसिस, जो भी इंटरनेशनल कोड्स के हिसाब से भी जो डायग्नोसिस डिफाइंड हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन और थेरेपीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका एक मैं आपको क्विक रिकैप दूंगी, जो कि हमारा ई प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी एलोबरेटेड प्रिस्क्रिप्शन है, आचार्य श्री महाराज श्री के सहयोग से जो बना है। डाइट और योगा का एक अलग सेक्शन है जिसका निर्धारण किया जा सकता है। कंप्लीट रिपोर्ट और हिस्ट्री देखी जा सकती है उस पर्टिकुलर पेशेंट की। अगर वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस है तो उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये हमारे डॉक्टर का लॉगिन है। सॉरी, ये डॉक्टर का लॉगिन है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग एक ही जगह सारा इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, जहाँ पे डॉक्टर कंप्लेंट सुन सकता है, वो डायग्नोसिस डिसाइड कर सकता है। अगर वो आईपीडी में है तो अगर वो शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है तो उसके सुबह से लेकर रात तक उसके सारे वाइटल्स कैप्चर करे जा सकते हैं। अलग अलग स्लॉट्स में ट्रीटमेंट डिफाइन करे जा सकते हैं। इसी प्रकार से भोजन द्वारा जो उपचार पद्धति है उसको भी यहाँ से नियंत्रित किया जा सकता है। योग थेरेपी यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी जा सकती है, अलग अलग मेडिसिन बताई जा सकती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे लैब का भी इंटीग्रेशन है। अगर डॉक्टर कोई टेस्ट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं तो कंप्लीट LIMS में कंप्लीट फ्लो है, और एक बार जब उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है, लैब में रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पैनल पे पुश कर दी जाती है। तो जो पेशेंट है उसको वो हार्ड कोडेड वो जो पेपर है उसको कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इसी पैनल पे जब आईपीडी से डिस्चार्ज होता है तो कंप्लीट डिस्चार्ज समरी, उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री है तो वो भी व्यू करी जा सकती है। यहीं से एक प्रिंट प्रीव्यू होता है, जैसे डॉक्टर प्लान करता है उसका पूरा ट्रीटमेंट, 15 दिन का अगर ट्रीटमेंट प्लान करता है तो एक स्क्रीनशॉट, एक क्विक उसको समराइज व्यू मिल जाता है प्रिंट से, और वो उसके प्रिंट भी निकाल सकता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा है डेंटिस्ट का, रेफर टू डेंटिस्ट भी करा जा सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे फेज 2 में एक कंप्लीट डेंटिस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करा गया है, तो उसका भी ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन देना संभव है। यहाँ पे क्रॉसवॉक का भी इंटीग्रेशन है, जो उपचार पद्धति पुस्तक है। अगर वो डायग्नोसिस जिनके लिए उपचार पद्धति अवेलेबल है
तो जैसे ही वो डायग्नोसिस सिलेक्ट करा जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी योग, उसकी डाइट, उसकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। इसी में आगे अगर मैं बोलूँ तो एडमिन या बैक ऑफिस या फ्रंट ऑफिस, इनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ये HQ मॉडल पे भी काम करता है। अगर आपका एक छोटा हॉस्पिटल है तो उस पर भी अच्छे से संचालित हो सकता है, साथ ही साथ अगर हॉस्पिटल की चेन है तो वहाँ पे भी ये अच्छे से कार्य कर सकता है। अगर HQ है, मान लीजिए जैसे कि हमारे वेलनेस सेंटर में हरिद्वार एक मेन हेड ऑफिस है और जिसकी अलग अलग शहरों में चेन है, तो यहाँ से जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो प्राइसिंग की बात हो या फिर हमारे उपचार के क्वालिटी की बात हो, वो सभी यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि मास्टर जो डेटा है वो यहीं से सेट किया जाता है। इसी प्रकार से IPD में IPD के जो टेम्पलेट्स हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है तो काफ़ी शोध के बाद में डॉक्टर्स की टीम ने IPD की टेम्पलेट्स बनाई हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको ये उपचार, ये भोजन पद्धति दी जाएगी, उसको ये मेडिसिन दी जाएगी। इसी प्रकार से उनके लिए एक डैशबोर्ड है, उनको एक कंप्लीट व्यू मिल जाता है कि आज प्रेमाइसिस में कितने पेशेंट्स हैं और कितने एडमिट होने वाले हैं, कितने डिस्चार्ज होने वाले हैं। मैं एक बार आपको डैशबोर्ड दिखाती हूँ बीच में। सारा एक बार में नहीं कर सकते क्या? नहीं कर रहा ना वो। सो ये एक क्विक रिकैप मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि आज मेरे प्रेमाइसिस में क्या कंडीशन है, आज कितनी करंट ऑक्यूपेंसी है, कितने एडमिशन है, कितने डिस्चार्ज हैं, मेल फीमेल का काउंट कितना है, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आज कितनी मेल थेरेपी प्रिस्क्राइब करी गई हैं, फीमेल थेरेपी प्रिस्क्राइब करी हैं, तो उस हिसाब से मैं थेरेपी सेंटर को भी मॉनिटर कर सकती हूँ। ईयरली टॉप 5 डिसीज कौन सी पाई गई और उस हिसाब से उसका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मान लीजिए मधुमेह ऐसी डिसीज थी जो कि सबसे ज़्यादा जिसका पेशेंट काउंट था, तो उसका स्टेट लेवल पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेशेंट थे, तो उसका भी हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। बीते वर्ष में कौन सी टॉप 5 मेडिसिन थी और थेरेपी थी जो कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को कंडीशन के हिसाब से दी गई। इससे ये फ़ायदा है कि अगर हमें पहले ही एनालिटिक्स ये पता पड़ जाए तो उस पर और कार्य करा जा सकता है, उन दवाइयों का और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, उन थेरेपीज़ को सुचारू रूप से और सुगम रूप से देने के लिए उन पे कार्य करा जा सकता है। हम रेवेन्यू समरी देख सकते हैं यहाँ पे, पेशेंट का जो जेंडर के हिसाब से या एज ग्रुप के हिसाब से, वो भी हम बाइफर्गेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पेशेंट काउंट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। साथ ही साथ हम टॉप परफॉर्मर डॉक्टर्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना अधिक रहा है और उस हिसाब से हम कुछ सही निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पे IPD का भी कंप्लीट मॉड्यूल है, तो रूम इन्वेंट्री और कितने अवेलेबल रूम्स हैं उनका वन शॉट में एक चार्ट रूप में अवेलेबिलिटी उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ जैसे कि आपने देखा कि डैशबोर्ड और एनालिटिक्स भी संभव है। यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं फ्रंट डेस्क स्टाफ या एडमिन के लिए जो कि IPD में पेशेंट्स को एडमिट का कार्य करते हैं, उनके एडमिशन के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे संभव है। डॉक्टर एलोकेशन है, कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो नर्सेज या जूनियर डॉक्टर द्वारा, तो वो भी यहाँ इस पैनल पे संभव है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोसिस हैं या फिर उनके वाइटल्स हैं, वो कैप्चर करे जा सकते हैं। अगर IPD एडमिशन है तो उस एडमिशन में अगर आपके यहाँ एक पैकेज है, जैसे कि अगर वेलनेस की बात करूँ तो मेंबर्स को कुछ और मेंबर्स को ऐड करना है रन टाइम पे, तो वो भी संभव है। कंप्लीट जो इनवॉइसिंग सोल्यूशन है वो भी यहाँ पे है। इसी प्रकार से जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो वन शॉट में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर उस संस्था का जो ओवरऑल लेखा जोखा देखते हैं,
तो NABH के अप्रूवल के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो वन शॉट में सारे डॉक्यूमेंट को, हर पेशेंट वाइज वो डॉक्यूमेंट को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर UI और UX की बात करें तो ये कोशिश करी गई है कि ये सभी यूजर रोल के लिए इंट्यूटिव हो, आसान हो, इजी टू यूज हो, कम से कम क्लिक के द्वारा एक्शन परफॉर्म करी जा सके। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका ऑन प्रेमाइस इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्लाउड पे अवेलेबल है और आपका जितना भी डेटा है वो सिक्योरली मौजूद है। जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्लाउड बेस्ड है। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि जो भी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो एक हेल्थ वॉलेट की तरह यूज़ हो सकते हैं, वो एक ही जगह पे कलेक्शन में अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ एक जो लैब का कंप्लीट मॉड्यूल है, जैसे कि अगर डॉक्टर कोई पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी का टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे अवेलेबल है। पेशेंट जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके बिलिंग सर्विस पे जाते हैं तो जैसे ही बिलिंग होती है लैब क्यू में ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड पुश हो जाता है। उसके बाद सैंपल कलेक्शन होता है, सैंपल कलेक्शन के बाद में वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उनका चेकिंग होता है कि नॉर्मल रेंज से डेविएशन तो नहीं है, उस पर एनालिसिस किया जाता है। ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेशन का काम होता है, अप्रूवल और रिव्यू का काम होता है। जैसे ही वो रिपोर्ट ऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा अप्रूव हो जाती है तभी वो प्रिंट के लिए अवेलेबल होता है और साथ ही साथ पेशेंट को एक नोटिफिकेशन चला जाता है SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो उपलब्ध है। इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया गया है। जैसा कि मैंने बताया HMS एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, तो फार्मेसी अगर हॉस्पिटल बड़ा है तो साथ में फार्मेसी का भी इंटीग्रेशन होता है। तो हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है BPOS, उसका भी HMS में इंटीग्रेशन है जिससे कि हम फार्मेसी को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे POS डिवाइस का इंटीग्रेशन है, जितना भी ओपनिंग और क्लोजिंग दवाई का स्टॉक है, क्योंकि कई जगह बड़े हॉस्पिटल्स में ये समस्या रहती है कि जो एक्सपायर हो जाती हैं, बहुत सारी मेडिसिन वेस्ट हो जाती हैं, वो सभी कार्य यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेल्स रिटर्न का मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ BPOS के साथ में प्रिस्क्रिप्शन का, HMS के प्रिस्क्रिप्शन का इंटीग्रेशन है। उससे ये फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए वो प्रिस्क्रिप्शन घर पे कोई पेशेंट भूल जाता है तो उसे केवल नाम, मोबाइल नंबर या फिर MR नंबर के माध्यम से वो अपनी फार्मेसी पे जा सकता है और उसका प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे फार्मेसी पे अवेलेबल हो जाएगा और वो मेडिसिन परचेज कर सकता है। साथ ही साथ अकाउंटिंग का कंप्लीट GST अगर फाइल करना है फार्मेसी को तो वो सारा सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। टेलीमेडिसिन, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन, अगर ऐसी समस्या है कि पेशेंट नहीं विजिट कर सकता है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी कंप्लीट मॉड्यूल है जिसमें कि वो अपना स्लॉट बुक कर देता है और डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है। वो प्रिस्क्रिप्शन उसका सेव हो जाता है भविष्य के लिए। जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें बिलिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। जो इन हाउस इन्वेंट्री अगर मैनेज करना है, हम लिनन की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो वो सभी BPOS के इंटीग्रेशन से संभव है। पेशेंट की जितनी बिलिंग है, चाहे वो कोई टेस्ट बिलिंग हो, अगर रूम की बिलिंग हो या और किसी OT की बिलिंग हो, वो सभी BPOS के इंटीग्रेशन से संभव है। इसी प्रकार से कंप्लीट अकाउंटिंग, अगर उन्हें कोई टैक्स इनवॉइस, उनके अकाउंटेंट्स को कोई टैक्स रिपोर्ट जनरेट करना है तो वो सारी कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है। HRMS, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स हैं, फ्रंट डेस्क स्टाफ है, नर्सेज हैं, तो HRMS का कंप्लीट इंटीग्रेशन है। उनका पेरोल, उनका लीव मैनेजमेंट, उनका रिक्रूटमेंट, वो सभी HRMS के माध्यम से किया जा सकता है। तो किसी बड़े हॉस्पिटल को अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक कंप्लीट सोल्यूशन है। ये एक डायग्राम है जिसमें कि HMS का BPOS और HRMS के साथ में इंटीग्रेशन दर्शाया गया है। BPOS बेसिकली हमारी जितनी भी बिलिंग सर्विसेज हैं, परचेज है और अकाउंटिंग है, उसके साथ इंटीग्रेशन होता है। इसी प्रकार से HRMS का भी, अगर रिसोर्स को मैनेज करने की बात करें तो HRMS का HMS से
इंटीग्रेशन है। और ये सभी मॉड्यूल, सभी प्रोडक्ट्स हमारे क्लाउड पे अवेलेबल हैं, तो कहीं भी इन प्रेमाइस आपको किसी भी प्रकार के कि हमको सर्वर की कॉस्ट लगेगी, वो कोई आवश्यकता नहीं है। और ये काफ़ी सिक्योरली सर्विस प्रोवाइड करी गई है। जैसा कि मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स अवेलेबल है, साथ ही साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आपके हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, पेशेंट ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, जियो वाइज पेशेंट ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, किसी सेंटर में ये देखना चाह रहे हैं कि सही ढंग से उपचार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो एक क्लिक में वो पूरे दिन भर के पेशेंट को क्या डाइट दी गई, क्या मेडिसिन दी गई, वो एक क्लिक पे संभव है। इस प्रकार से बहुत सारी रिपोर्ट, अगर अकाउंट टीम को किसी ऑडिटिंग वगैरह के लिए जितनी भी रिपोर्ट लगती है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे है। जैसे कि हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, हमारे वेलनेस सेंटर को 1 साल हो गया है, तो हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस भी हमने इम्प्लीमेंट करा है कि आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जो किस मंथ में इस डिसीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा रहेंगे, साथ ही साथ किस मंथ में हमारे पास पेशेंट का काउंट, एक टेंटेटिव उसका अप्रॉक्सीमेशन भी हमारे पास है। यहाँ पे कंप्लीट सल्यूशन है रूम मैनेजमेंट को लेकर और हाउसकीपिंग को लेकर। अगर जो भी हॉस्पिटल HMS यूज़ करता है तो कंप्लीट एक सपोर्ट की हिरार्की है, L1, L2, L3। उन्हें जो भी इश्यूज़ या उनके कोई कंसर्न्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो वो कॉल के द्वारा या फिर ऑनलाइन प्रस्तुत होकर, मतलब उनकी सारी क्वेरीज को तुरंत ही रिजॉल्व कर दिया जाता है, तो सभी सेंटर ताकि सुचारू रूप से काम कर पाएँ। यही सब कुछ था HMS के बारे में। थैंक यू जी, धन्यवाद नेहा जी। थोड़ा इसको इसलिए आप लोगों को दिखाया, ये पतंजलि के संस्थान के द्वारा जो हमारे IT संस्थान है भरवा सॉल्यूशन के नाम पर, उसके द्वारा निर्मित यह कंप्लीट HIMS सॉफ्टवेयर है, यानी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी यह प्रमाणित है। और अभी हम बहुत सारे एलोपैथिक हॉस्पिटलों में भी हम कई जगह पर लगा चुके हैं और कुछ जगह पर लगा रहे हैं। और आगे की खुशखबरी ये बता दें कि जो UK में केयर होम हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी श्रृंखला है केयर होम की, वहाँ पर भी अभी तक सिंगल सोल्यूशन नहीं था, 3-4 सॉफ्टवेयर को मिला करके वो सोल्यूशन करते थे, अपनी समस्याओं के लिए उसका प्रयोग करते थे। तो अब आगे यही हमारा जो भरवा सॉल्यूशन का HIMS, वहाँ पर भी कई जगह पर प्रयोग होने वाला है। यानी कि पतंजलि न केवल योग आयुर्वेद की बात करता है, अभी तो आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर आधुनिक मापदंडों पर हम पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जो आपको ये समझना है कि जो सपोर्टिव जो सिस्टम हैं, जिनके सहयोग से हम उस विधा को आगे पहुंचाना चाहते हैं, या अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जिन IT माध्यमों के वजह से वो अपने सिस्टम को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उसमें भी देखिए टेक्नोलॉजी कोई पैथी नहीं है। सर्जरी भी क्या ये टेक्नोलॉजी है, ये पैथी नहीं है। तो ज़्यादा एलोपैथिक वालों ने अपना लिया, तो अब आयुर्वेद वाले सर्जरी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद वालों को उपहास की दृष्टि से देखते हैं। तो ये तो क्रिया है ना, शल्य क्रिया है, ऐसे ये IT तकनीक है। तो आज आयुर्वेद योग आदि विधाओं से जुड़ी हुई संस्था ऐसी तकनीक इजाद करती है, रिसर्च करती है, डेवलप करती है कि जो अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, यदि वो लोग हमारी तकनीक को अपना करके गौरवान्वित महसूस करते हैं या हमसे आग्रह करते हैं कि हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए भरवा सॉल्यूशन का बना हुआ HIMS दे दें, तो यह एक तरह से तकनीकी क्षेत्र में पतंजलि की प्रामाणिकता का एक उदाहरण है। ये आप सबको इसका बोध होना चाहिए, इसलिए हमने बात कही। क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे जी ये कॉन्फ्रेंस में फिर IT वाली बात क्यों। बात इसलिए कि तुमको ये पता होना चाहिए कि हम कहीं से भी पीछे नहीं है। प्राचीन काल की कहीं की कहावत है कि किसी ऋषि को किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति ने उसको छेड़ दिया, तो ऋषि ने कहा कि उभयो अपि समर्थोस्मि सपादपि सरादपि, कि बोले छेड़ मत, या तो श्राप दूंगा, यदि श्राप से नहीं मारा तो लठ से मारूंगा। तो इसीलिए कि सामर्थ्य जो है वो विद्या में होनी चाहिए, सामर्थ्य आपके अनुसंधान में होनी चाहिए, तो दुनिया उसको स्वीकार करेगी ही।
तो उसको एक उदाहरण दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो भविष्य में इस चिकित्सा क्षेत्र में जाने वाले हैं, या हमारे जितने भी यहाँ पर प्राध्यापक गण बैठे हैं, वैज्ञानिक गण बैठे हैं, बहुतों को यह पता भी शायद नहीं था या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उस क्षेत्र का कोई भी उसका कोई भी पहलू हो सकता है, कोई भी उसका उससे संबंधित कोई भी विषय वस्तु हो सकता है, हमने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है, और उसमें भी पूरी प्रामाणिकता के साथ में। आज बहुत सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल इतना बेहतरीन HIMS सिस्टम के साथ नहीं चल रहे हैं जितना बेहतरीन सिस्टम से आज पतंजलि के पूरे हॉस्पिटल श्रृंखला चल रही है। यानी हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी आरोग्य केंद्र हैं, सब इंटीग्रेटेड हैं सिस्टम से, IT सॉल्यूशन से। यदि अभी आप देखना चाहें, एक क्षण में हम दिखा सकते हैं कि सुबह से हमारे कितने सेंटरों में वैद्य हैं, कितने पेशेंट आए, किस रोग के रोगी आए, क्या औषधि लिखी गई, वो रोगी नया था या पुराना था, तो वो सब रिपोर्ट हम रियल टाइम पर उसको लाइव हम देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी वो पतंजलि का एक इस श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा संकल्पित, यह जो संस्थान का एक संकल्प है कि हमें अपनी विधा में रहना है, परंतु तकनीकी ज्ञान के रूप में भी हमको अग्रणी रहना है। तो ये एक उदाहरण था, इसलिए नेहा जी का धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्री जी। सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को और आचार्य श्री के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। Once again, a very warm welcome to all the respected dignitaries, our fellow colleagues and dear students. Firstly, I would again like to thank Neha Madam for illuminating us regarding the concept. Please give her a huge round of applause for this. Now, we'll be heading towards our first technical session of the day 3, themed as Isle of Ayurveda Omics from Ancient to Modern Contemplation. In this session, we have 4 renowned speakers from different parts of the world, and to chair the session, we are delighted to have Professor Jaya Balan sir and Dr. C.V. Dhanraj sir today with us. Regarding our virtuous session chairs, Professor Jaya Balan sir is currently serving as principal in Alwar Pharmacy College, Rajasthan. He is having 29 years of teaching experience. He received Principal of the Year Award in 2013, IPGA Fellowship Award in 2018, and many more. Sir has chaired many scientific sessions in IPCs and other conferences. I request Sir to please join us on the stage as first session chair of the event. Please welcome him with a huge round of applause. Our next session chair is Professor C.V. Dhanraj sir. Sir is presently serving as Dean PG Studies, Patanjali Ayurveda College. He has guided several PhD students and uncovered several novel formulations to combat both acute and chronic disorders. His presence at both national and international platforms is noteworthy. I again request Sir to please join us on the stage as session chair. Please welcome our session chairs with a huge round of applause. Now my request to our session chairs to please introduce the first speaker of the event, Dr. Sachin Deshpande sir. My request to our audiences to please keep applauding for us virtuous speakers of the day. Please welcome Sachin Deshpande sir with a huge round of applause. Morning, all of you. With the sincere prayers to Swamiji and Acharya ji, I would like to start today's scientific session as chair. First of all, I would like to welcome Dr. Sachin Deshpande sir for his first talk.
Dr. Sachin Deshpande is a Shalyantra specialist, general surgeon working in Pune. Sir is having more than 15 years of experience. He is an independent consultant as well as senior consultant for the organization FAIPM, that is Foundation for Ancient Indian Philosophy of and Medicine. He has done thousands of general surgeries which include variety of cases like complex gastrointestinal surgeries, breast cancers, biliary surgeries, thyroid tumors, varicose vein surgeries, and many more. Also, he has done rare cases like carotid, body tumors, parathyroid swelling, branchial fistula, fecal fistula repairs, amputations, skill grafting, etc. He also has special interest and experience in critical care. Apart from this, he is Vaidya Scientist Fellow from TTDU Bangalore. He is a life member of World Association of Laparoscopic Surgeons. He is recipient of awards like Bapurao Patwardhan Sushruta Award, Rajiv Gandhi Gold Medal Award for social work. I would like to call upon Dr. Deshpande to carry on this stage issue, sir. Good morning to all of you. Shraddheya Swami Ramdev ji, Shraddheya Acharya Balakrishna ji, and all the dignitaries present on the dais, all the staff, faculties of these esteemed organizations, the organizing committee of the conference, and all the students. I am very thankful to the Patanjali University for giving me this opportunity. My topic of speech today is interconnecting surgical art, philosophy and technology for holistic health. In the same line, just before 2 minutes, Shraddheya Acharya ji has said, surgery koi pathi nahi hai, ye to tantra hai. So, basically, there are many questions in the mind of students as well as the general public also, that what is the relationship between surgery and Ayurveda? And this is a big challenge the persons like us who are practicing in the field has to face almost many times in our life. Here, the theme is that how to interconnect the surgical art, surgical philosophy and the technology for the holistic health. Before starting, I would like to put a quotation from Bhuradharanyaka Upanishad, and that is, Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Basically, Ayurveda itself is holistic. Holistic health is nothing different than Ayurveda. We nomenclature wise we make it slightly separate. So whatever is the whole, it is a WHO whole, that understanding of the whole is the basic foundational principle of Ayurveda philosophy. Ayurveda has come from the Sankhya Darshan, from the Nyaya Darshan and from the Vaisheshik Darshan, and from those darshanas the fundamental principles of the Ayurveda are built, and those fundamental principles are taking care of the holistic health of the individual, because it is a universe and cosmos and human relationship. Human is not different from the cosmos. The sun is existing in the body, moon is existing in the body, air is existing in the body, and we call it as three doshas. The pitta is as the form of the sun, the kapha is as the form of the moon, and the vata is as the form of the air. So this is the cosmos and the human body relationship which is existing already, but it is not, this concept is not there in the modern science. As the ancient philosopher Aristotle in its metaphysics has said, the whole is more than sum of its parts. This is the difference. This is the philosophical difference we have to always keep in mind when we are comparing the modern sciences with the
Ayurveda sciences. The things which we are trying to explore by means of the reductionist approach cannot give complete answer to whatever is happening in Ayurveda. So that is the reason, see, when you take out curcumin from the Haridra, the curcumin is not same as the Haridra. Haridra when taken as a herb, its activity is different, and curcumin, when it's, though it has the medicinal property, it is not as same as Haridra. This is the difference which we have to always keep in mind as far as the holistic approach is concerned. What is holism? Holism is the ultimate synthetic ordering, organizing, regulative activity in the universe which accounts for all the structural groupings and synthesis in it. This particular quotation or this particular definition of holism was given by this J.C. Smuts in 1926 in Holism and Evolution, in the book by name Holism and Evolution. So whatever is ultimate synthetic ordering, organizing and regulative activity, so which all such kind of activities which are happening in the body are do come under the domain of holism. So what is holistic health? As last 2 days we are seeing the same, that physical, mental, spiritual, emotional well-being, this is as far as the definition is concerned, but actually prasanna atma indriya manaha swastha ityavi diyate. When your atma is prasanna, when your mana is prasanna, when your indriyas are prasanna, then you are called as the swastha. Now see the difference. In modern medicine or in Western medicine, there is no concept of atma. So they need not have to consider for the Atma. Now they call it as spiritual or something and all. But the concept of Atma as the way it is given in the Ayurveda philosophy, it is not there in modern medicine. So what thing happens is that in understanding the swastha, that prasanna atma indriya mana, the approach of the physician or approach of the surgeon who is belonging to the Ayurveda is different than that of the modern sciences. Now slightly going back, how these two things differed. The development of modern medicine, it has a long history, definitely it has a long history, because if you see starting from the period of Papyrus, Hippocrates, but interestingly Galen was such a scientist who has ruled for 1400 years, and the things which were given by Galen were followed for 1400 years. But later what happened, it was William Harvey. So Galen was saying that the circulation happens at the level of liver. But that particular theory of circulation was cut by William Harvey, and he said no, the circulation it happens at the level of the heart. Heart is the important organ for circulation. So now what happens, because of this particular thing, the paradigm of medicine has completely changed after the period of William Harvey. But it is not only William Harvey, because if you see the period of 16th and 17th century, that time Newtonian mechanics has come. That time, at the same time, there was, in the similar period of 16th and 17th century, there was René Descartes. He is supposed to be the father of the modern Western philosophy. And this René Descartes has given the idea of mind-body dualism. He says, I think therefore I am. मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ. I think therefore I am. And he said mind is different and body is different. So body has to be treated like a machine. So treat like a machine. So mechanisms, how, see the way a vehicle works. Tire खराब हो गया, tire बदलो. Axle खराब हो गया, axle बदलो. So in the same way, so machine खराब हो गया, a part खराब हो गया, इसको बदलो. So it is the same thing happening with the transplantation nowadays. It has become the fashion. Transplantation has become the fashion. So machine है तो उसको बदल दो. Machine जैसा thinking उसमें आ गया. He has definitely very big contributions. I am not going towards it because this is not the topic now. But I am trying to convey what happened to modern medicine. So here William Harvey, René Descartes said that mind and matter is different. Mind is separate from the matter. This is completely in opposition with the principles of Ayurveda. It is completely in opposition with the principles of holistic medicine, because mind and matter are not separate. So he said mind and body dualism.
Now this mind-body dualism is adopted as it is in the development of Western medicine, Western biochemical medicine. Here he has put the concept of mechanism. So what he said, oh, so you have to find out the mechanism. So really whatever in biomedicine, in probably in all reductionist sciences, what we are doing is finding this reductionism. So mechanisms, so many mechanisms, this mechanism, and we go into the jungles of mechanism, what sir rightly told yesterday. So we land into the jungles of mechanism. So mechanistic approach. So whatever you see, the book of physiology, the book of pathology, or any book of modern medicine, of Western medicine, you will find this mechanism, that mechanism. And this particular path has continued for last 400 years, and it has become the mechanistic physiology and mechanistic medicine, though it has given lots of contribution, there are no doubt about it. It has a contribution, but it has the limitations also. That is the reason the need of such conferences of holistic medicine, because we know the limitations. What happened? When 1964, when Watson and Crick has found that DNA model, everybody felt now we have found everything. हमें ब्रह्म मिल गया, हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, DNA से सभी हमें पता कर सकते हैं. But what happened after 40 years, after 50 years, now there are limitations. We can't know everything by DNA. We can't know everything by DNA. And then what happens? There is something. There are many things beyond those reductionist models. And here, this complete see, it was actually a natural philosophy, really speaking. And these sciences, the physical sciences, the chemical sciences, has developed a medicine. Medicine is applied science. Actually, medicine is applied science. It has developed from the chemistry, mainly chemistry, and some part, to some extent, physics, to some extent, not much. Because the theories are less in medicine. No, physics is at least rich in theories. So these natural sciences, these particular physical and chemical sciences, has diverted from the natural philosophy. And the same impact it carried on medicine. The same impact it carried on medicine. So we will find that there are no very less theories. See, what is the difference from the student sitting in Ayurveda colleges and the student sitting in the modern medical colleges? What is the difference? We first say about the Sattva, Atma and Sharira. We say Sattva, Atma and Sharira. So first we find about the Mana, then we say about the Atma, then we say about the Sharira. I know my topic is surgery, I am coming towards it. I will come towards it. But this background is necessary. But if you go to a medical college, it starts with a dead body, a dissection of the dead body. So in the first day of the medical college, after entering into the dissection room, we feel like, oh, after the death, we become so foul smelling in the formalin, in the... So, you know, like a kind of different mindset happens to the students of medicine. And very interestingly, it is a Sharira. Anatomy, physiology. There is no separate. Anatomy and physiology are not separate. It is a Sharira. You will see Sharira Sthana in all the Samhitas. So, anatomy and the physiology, they are connected together, and then they call it as, in ancient classics, they call it as Sharira. So this is a major difference, because this practical difference comes at the level of diagnosis when we practice. It comes at the level of the diagnosis. And even though it has given the new directionality of the medicine, but the new directionality of the medicine, okay, definitely along with many plus indeed, but there are many minus in those also. So what is anatomical integrity and the functional organization? So basically, a surgeon has to critically assess in each and every of its patient that to what extent the anatomical integrity is disturbed. Because when we are going to operate, when we are going to dissect, when we are going to correct the anomaly, we need to exactly, precisely define that how the anatomical integrity of that particular part, of that particular area, of that particular organ is disturbed. That first basically, this is a fundamental thing a surgeon has to know. If he doesn't know that, then there is no role of surgery. He can't do any surgery. So first, any correction is when you put the blade, when you take the incision, and when you do the operative procedure, it has to be first the
anatomical integrity definition. He has to define. But this anatomical integrity is along with the functional organization. Now, these two has to be linked properly, because this particular concept in modern medicine, these two concepts, when those are interlinked, in modern medicine also those are interlinked, and in Ayurveda also those are interlinked, but there is substantial difference. Functional organization, so any functional organization is getting disturbed in the body, and that functional organization which is getting disturbed in the body is secondarily giving rise to the anatomical problem. For example, a simple example I will give, there is a lack of iodine which is giving rise to the enlargement of the thyroid. Example, that functional disturbance is giving rise to the anatomical problem. So what we do, we give simply iodine and the swelling regresses. But there are certain cases these are only anatomical integrity is lost. For example, congenital hernia or congenital anorectal agenesis. I assume that you know all these words. So anorectal agenesis, जन्म के समय बच्चों को एनल कैनोली नहीं होता, जन्म के समय बच्चों को रेक्टमी नहीं होता, complete absence of that. So this is an anatomical entity which is anatomical deformity, and it has to be corrected surgically. There is no role of medicines. There are congenital hernias. Some congenital hernias over a period of time they get automatically corrected, but if the defect remains as it is, then those will not be get corrected, and those hernias has to be operated. So basically, even a surgeon from the modern medicine or even a surgeon from Ayurveda has to first understand that what is anatomical integrity, how it is disturbed, or the functional organization, how it is disturbed in this in the particular patient, that the patient which has come to him or her, whatever. Now, the difference happens. Where? At the Ayurveda level. So, whenever a surgeon of Ayurveda approaches, he has to consider, oh, what is happening to Stroto Dushti? What is happening to the doshas? What is happening to the armor? A modern medicine surgeon will not consider about the armor. We have to consider about the armor. I can tell you, frankly, that in my practice of proctology, I have found that 70% of the patients of proctology means anorectal conditions, get managed by medicines only. They don't need surgery, and only 30% of the patient need surgery. But if you go to the modern hospital, you will find that 90% of the patients undergo surgery. Because basic understanding of ajirna, basic understanding of armor, basic understanding of the diseases of the annava srotas like amala pitta, those are not treated properly, and directly the patient is taken for surgery because of looking at some anatomical defect. But that anatomical defect can be corrected by correcting the underlying functional organization which is disturbed in that particular patient. This is the difference what a Ayurvedic surgeon definitely makes. So, while, see here, that's the reason, like sciences develop, it's a process of evolution, and anomalies do come. That day, Swami was giving one example of a cancer lady where there was a metastatic cancer. And see, if we regularly hear the lectures of Swamiji, we'll come across many such cases. See, there was an assumption before 20 years in the minds of people that, oh, BP is not correctable, sugar is not correctable, cancers are not correctable. But now, after the advent of yoga and Ayurveda for last 20 years, especially in the university like Patanjali, the paradigm is changing, and we are able to find out the anomalies what are existing in the modern sciences. I will tell you the example. 5 minutes थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा मैडम. There is a fashion of bypass surgeries, and they put so many reports, so many ECGs, so many 2D echocardiograms, and we will find that in those reports we find that ejection fraction is reduced. And see, when the ejection fraction is reduced, there is a typical reductionist cardiology which says, okay, there are the blocks in the coronary arteries, and it has to be either corrected by means of the angioplasty, or it has to be either corrected by means of the bypass surgeries. But they don't consider about the importance of collateral circulation, what is happening. And now, when the therapies like yoga, therapies like Ayurveda have come into the picture, and especially the substantial research in last 30 years, 30 to 40 years, maybe more than that, sir. This is according to my age, I am telling. I may be wrong.
we are able to find that these bypass or these angioplasties can be prevented. Isn't it a contribution? See, angioplasty actually is a surgical procedure. It was invented by a surgeon and he got the Nobel for it. Bypass, these are all surgical things, but those can be corrected by means of the Ayurvedic therapeutics. Yesterday one nice case was shown of a L1, L2 disc problem or stenosis by one faculty from this college only. A wonderful result when there was no movement of the limbs. By means of the treatment, the patient is walking nicely and the 2 years follow-up was also shown. So this particular case, if it goes to the modern hospital, it will be taken for the endoscopic spinal surgery, and there is no other option for that as far as the modern surgery is concerned. But here we are doing the miracles, and this Ayurvedic surgeon has to do. This is our role. This is our area. We have to treat. That's the reason I have put further that Shastra can guide the science. We can guide the science. Because, see, this is my particular perception is that there cannot be two different physiologies of the human body. There cannot be a separate Ayurvedic physiology. There cannot be a separate allopathic physiology. It's a human being and it's a physiology, that's it. What is happening, we have the problems of understanding. We are not able to tackle the differences at the level of the understanding. And that is the reason these kind of the anomalies are happening in the science. So, the Shastra can guide science. So, coming back, what a surgeon as an art of surgery has to look into. So, here one nice expert I have taken from the Nature, from James Paget, and in an article of 1891, The Philosophy of Surgery. The recording and observation, these we last 30 years, my colleague is also here, we are just observing and we are learning through the observations, nothing else we are doing. The habit of recording facts is nearly essential to the habit of accurately observing and remembering them. That which we intend to record, we are bound and may be induced to observe carefully. And the very act of carefully recording is nearly equivalent to a renewed observation. There is a substantial role of observation. So it is my sincere appeal to all the students that keep on observing. You learn many things through the observation. I can definitely tell you after sitting on this dais, after standing on this dais, that we didn't do all the surgery in our trainings. हमें हर एक सर्जरी हमें ट्रेनिंग में करने को नहीं मिली. There are certain cases, many cases we had to go on our own after starting our practice. It was the first case which came to us. You know, there are the cases like the parathyroid tumors, very rare case. There are carotid body tumors, rare cases. And you know, it happens that you have not even seen also that case. But if you know the anatomy well, if you know the surgical art well, if you know the surgical principles well, definitely, if you know the technology to some extent well, I am not much in favor of technology because I am not that much technocrat. So if you know those principles well, definitely you can do those surgeries successfully. And here, whenever it comes to the surgical advances, what are the surgical advances? See, when we talk about the technology, here the theme is the technology and the holistic health. So what are those surgical advances? So surgical advances, just for you know all this, but still I have listed it. Laparoscopy, robotic surgery, transplantation, endoscopy, lasers, interventional radiology, interventional cardiology, interventional neurology, gastroenterology, and so on. So many are there. Definitely those are useful. Recently, I had a case of carcinoma of the prostate and it was necessary to operate, and the robotic prostatectomy is a gold standard now, because that prostate is in such a fossa that it is very difficult for you to go in that fossa and manually operate it, and robots are really boon. Laparoscopic surgery, it's a gold standard for cholecystectomy, but it is not the gold standard for all. It's not the gold standard for all. Because if you can remove the appendix from a 3 centimeter incision, then why you need to take 4 different incisions or 4 different places so as to remove the appendix? I never understand this. What is the need? Because you can definitely remove in 3 to 4 centimeter of the incision appendix. So whenever it is required, it is, you know, like laparoscopic cholecystectomy surgery किया तो 1 लाख मिलता है, open किया तो 50,000 मिलता है. ऐसा commercialization नहीं चाहिए हमें. We don't want that. So whatever is required. See, oncosurgery hai. When you want to do the proper lymph node dissection, that is a mainstay in the treatment of the cancer surgery, it has to be, if you are doing it laparoscopically, fine.
but by doing laparoscopy, you can't keep just the lymph node inside and make the disease to progress later. So the dissection has to be accurate. It doesn't matter whether you are doing open or whether you are doing laparoscopy. Transplantations. There is a fashion of transplantation now. Knee replacement. And the city I am working, there is the competition now. हमने 200 किया, हमने 500 किया, हमने 1000 किया. It's a competition. I have the patients of 40 years ladies, just early osteoarthritis, and has been advised total knee replacement. And I tell you, simple medicines for 2 or 3 months, they are getting completely cured. What is the need? Matter of 4,000 to 5,000 rupees. That's it. We can save the surgery of 2 lakhs rupees, and it's not the surgery. It is saving that particular normal joint. You know, it's a physiological joint. You are putting the artificial joint in that. So you have to definitely, though there are technologies, ये मॉडर्न मेडिसिन वालों का काम नहीं, ये काम हमारा है कि ये टेक्नोलॉजीज ठीक से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. And wherever the technology is required, definitely, I also use many times in my entire practice. But whenever it is not required, then definitely we have to keep away from those technologies. Then lasers are there. You know, in Patanjali surgery department, the fantastic work is going on about the lasers by Dr. Gupta ji, and even there is nice work going on in the cities like Pune, but lasers have also the limitations, and he is going to demonstrate about it. There is interventional radiology, interventional cardiology, interventional neurology. So many things are there. Those are definitely very good for diagnosis. Whenever there are emergency conditions, then definitely those advances has to be taken into the account. But we should never forget our fundamental principles, because a surgeon who is practicing Ayurveda surgery has to see Vat, Pitta, Kapha, has to see Dosha, Dhatu, Mala, has to see all the fundamental principles he has learned in the first year of his graduation. He should never forget it. We should not drag behind the allopathic surgeon. Unfortunately, we have not dragged ourselves from behind the allopathic surgeons. So now this is a gist of very important slide in my opinion. Whether technology is killing the clinical medicine or clinical surgery. This is a practical problem. So please don't misunderstand, especially the PRI team, because you may feel that why is talking like this. Because this is practically happening at the level of education. See, कोई hospital में आप जाते हैं. Excuse me, Dr. Deshpande ji, we are running short of time. Yeah, so give me some. We finish half an hour, yes. Yeah, I'll complete in next 5 minutes. Yeah, 2 minutes I'll give you. Yeah. So here, this technology, the students are getting dragged behind the technology. There are many things to talk about it, but because of the time limitations, I will just go to the next slides. So here, clinical medicine has to be completely preserved, clinical surgery has to be preserved, and we should not run behind the blind technologies, because clinical diagnosis is the best diagnosis. So I have said about the what Shastra can definitely guide the science. It was the theme of our Vaidya Scientist Fellowship, how the Shastra can guide science. And I can see, I can have sent some slides of surgery I have put here for just examples. This is a tribal woman and how the economy is affecting health. See, it's an inoperable tumor. She didn't have money, so she couldn't go to the doctor. Now this has become inoperable. So the economical problems, financial problems. Yesterday somebody told that economic also carries a very importance in holistic health. Economy is also part of that. Testicular tumor, so this completely resembles like a hernia, but it's not a hernia. It was a malignant testicular tumor. It was this case which I operated, which was after removal of this particular testicular tumor. Then it is a carcinoid tumor of the small intestine. Patient came only with loss of appetite. He was not having any other symptom. मुझे सिर्फ भूख नहीं लगती. But when it was investigated, it was found to be the carcinoid tumor of the distal ileum, and this is the right hemicorectomy specimen, and the part of the small intestines and large intestines were removed. It's a long-standing varicose veins, nicely recourse by the varicose venous stripping. That stripping will prevent the further ulcer formation. This is a rare case of cystic hygroma. It's a rare neck swelling. So this is after the removal of the swelling. This is very interesting case, a 90-year-old lady with breast carcinoma of the breast with a big thyroid tumor, and trachea was deviated. Anesthetist was not ready to give anesthesia. It was operated under local anesthesia. Carotid body tumor is a schwannoma. Normally it gets confused as a lymph node, but actually it is the tumor which is attached, quite closely attached to the carotid bifurcations.
It's a recurrent incisional hernia, operated 2 times. It is a size 30 centimeter by 30 centimeters with intestinal obstruction. Actually, I had a lot many to speak about this, but I am just cutting short. So here, after the repairing by mesh plasty, along with resection anastomosis was also done in this case. It is a broad ligament benign cyst. It is a cyst of the broad ligament of the uterus. Then it is an inoperable oral cancer, as I said before some time. Money should not be the constraint for health care. We have to take care a lot about it. Then intestinal obstruction with internal herniation. You can see the internal hernia there. The loops of the boiler internally got herniated. Then this was the case of intestinal stricture, which was stricturoplasty was done. This was the case of breast cancer, where the modified radical mastectomy was done. This is my last slide. There is one very nice quote from Samartha Ramdas. Samartha Ramdas was the saint from Maharashtra, and this is in Marathi. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. In Patanjali, there is the samarthya of chalwal. Chalwal means a movement. A strength of the movement is there. This movement is started and is going on by Shraddheya Swamiji and Shraddheya Acharyaji. Parantu tethe bhagwantache adhisthana pahije. Till you don't have the connections with the supreme consciousness, you will not succeed. You will not get any success. Thanks to all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. Sachin Deshpande ji. Any questions, please? Any questions? We are running short of time. Another speaker is waiting online. Okay, thank you so much. We really appreciate your putting the 3 different areas of surgical art, philosophy, and technology in one platform as a holistic health. It's a very fantastic mode of really bringing the scenario of surgery and philosophy and human being's necessity. And the first aspect you spoke about, anatomy integrity, really great thing. Irrespective of the Pati, anatomy is anatomy, human anatomy, universally Homo sapien is same. You have very well addressed the anatomy integrity in the first aspect. And the second aspect, you said that your philosophy, prasanatmendriya, that is patient's desire of being happiness. It's a very good philosophy. And then third one is the technology. He really given a good examples of bypass surgery, transplantation, knee replacements, etc., which has been done worldwide now, and its effects and on the quality of life, healthy life, yes. And I really appreciate. Let us give big applause to Dr. Sachin Deshpande ji, please. Yeah. There is a small modification of the program. We are feeling that we better go to the third speaker, Murali Krishnan Dhanasekaran, and because he's online, the time has already been given, so he may be waiting for that. And after that, with the permission of Dr. Sachin ji, we'll have the next speaker will be after him, will be the Sachin, with small modification. I leave the introduction of Dr. Murali Krishna Dhanasekaran to the chairperson. Yeah, thank you, sir. Dr. Murali Krishna Dhanasekaran, he is a professor of pharmacology and toxicology at the Department of Drug Discovery and Development, Harrison College of Pharmacy, Auburn University, Auburn, Alabama. He served as a research instructor of pharmacology at Texas Health Sciences Temple. His major area of research is related to pathophysiology, pharmacology, and toxicology in dementia, movement disorders, addiction, especially substances of abuse, designer drugs, nicotine, alcohol, hyperglycemia, and aging. His research was funded by the Alzheimer Association and pharmaceutical companies in the USA. He has over 113 peer-reviewed publications and 40 book chapters in the area of pharmacology, toxicology, and natural products. He has been an editor and editorial board member of several journals including Natural Products, Pharmacology, Toxicology, and Neuropharmacology. With this small introduction, I'd like to call upon Dr. Murali Krishna Dhanasekaran to carry on his presentation. Please, Dr. Murali. For a kind introduction. Can you see my slides? We are seeing your slides, Murali. Okay, thank you, sir. And you are audible. So today we are going to talk about cannabis, a miracle natural bioactive with loads of myth and novel pharmacodynamic action for global healthcare.
So here, I just want to make sure that I make it a point to say that it is a natural bioactive to start with. And then there are loads of myth. It's not only in India or Indian subcontinent, there are loads of myth globally. I would like to talk about that. And why I want to make sure that I want to emphasize that it is for future global healthcare. Whether we like it or we don't like it, we have our own opinion. But to be honest, it has been accepted. There are a lot of drugs that has been approved, and it is going to be for the global healthcare. So now, today's topic is going to focus on the therapeutic purpose. So I'm going to look into the anti-cancer effect. There are several cosmetic purposes for that which we have used. And then we all agree that this particular natural bioactive has been used for recreational purpose, not only in Indian subcontinent, but throughout the world. And then we look into the future global healthcare. What is the role of cannabis? So I'm from Auburn. So Auburn, we are in the south. You can see from the map, we are very close to Atlanta. It's a very beautiful campus. It's one of the oldest campus here. So I'm from Auburn University, Harrison College of Pharmacy. And then to start with, let's first start with what is a substance of abuse. I'm going to connect this with cannabis. So it refers to any harmful or hazardous or psychoactive substance. So we want to agree that this is a harmful substance, number one. Number two, it is a psychoactive. The word psych means mind. It activates the mind. So this is very similar to alcohol and other illicit drugs. So again, I just want to make sure that what is a substance of abuse. So what is the problem of a substance of abuse? So you have addiction, which leads to dependence, which leads to toxicity, and ultimately it leads to mortality or death. So that is the major problem with any substance of abuse. So now, what are the different substances of abuse? So we know that opiates, stimulants, sedatives, anabolic steroids, phencyclidine, hallucinogens, alcohol, nicotine, inhalants, all of these are called as substance of abuse. These are common substance of abuse. Then that, marijuana. So what is marijuana? It refers to any product that comes from cannabis sativa. Why is that? Because it contains THC, tetrahydrocannabinol. So the big picture is any natural substances coming from cannabis sativa, and mostly which contains THC. So why is that? Because again, we go back to the concept of substance of abuse. THC has significant addiction potential. So to start with, I would like to start to thank the collaboration with Jaybalan sir and everybody. The first manuscript here I start with this, a re-evaluation of past to present day, the use of blissful neuronal nutraceutical. So again, I want to use the word blissful neuronal nutraceutical. Why is that? Currently, cannabis has been approved for the treatment of epilepsy. In US and around the world, it has been approved for the treatment of epilepsy, seizures. Okay, so now I just want to look into the past. Why was it hidden for so long? Why is it coming up currently? So in a big picture, except the Incan civilization, we did a very in-depth study about this. With regard to this particular cannabis, except the Incan civilization, the Aztec, the Roman, the ancient Greek, the ancient Egyptian, Chinese, Mayan culture, Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization, everybody have used cannabis. And the cannabis has been used traditionally for spiritual, ritual or ceremonial purpose. However, people also have used it for recreational purpose. And then there are literature which it has been used for medicinal and commercial purpose. So when you think about any substance from the past to the current situation, what is the role? So now in a big picture, we are agreeing that cannabis in every civilization has been used for ritual, recreational, medicinal, and for commercial purpose. So religion came only after civilization. So we start with civilization, and now let's go to the various religion. Again, the only religion where it is not very clear about the role of cannabis is Christianity, Confucianism. Okay, there's the two things that they have not used. But every other religion, even in Islam, okay, if you see in Buddhism, Judaism, okay,
or Shinto, Sikhism, everywhere they have been using it for either spiritual, recreational, medicinal, or commercial purpose. So we know that in India, we use cannabis for spiritual purpose, recreational purpose, medicinal purpose, and for commercial purpose. So as I want to validate that, cannabis is a natural product or a natural bioactive that has been used by different civilization, by different religion for spiritual, recreational, medicinal, and commercial purpose. So there are very, very broad and wide literature to support this particular use. And then if we want to go back, now I finished civilization, then religion, I'm coming to the countries. So from Chinese, Indian, Egyptian, Iraq, Turkey, which we can call Persian, okay? And then Italy, Greece, Cyprus, Turkey in European. And you can see that from Spain to Americas, France, Britain, USA, Israel, everybody have used cannabis. Or there are literature that has shown that cannabis has existed in part of this world in the past 5,000 to 6,000 centuries. So for sure, we have enough evidence to show that cannabis has been used or cannabis has been utilized by civilization, religion, and by different countries. So without doubt, now the question is it a religion versus science? Yes, both have not completely banned the use. So let me use the other way around. I'm not telling that everybody has approved the use, but they have not banned it completely. So that gives, for any pharmacologist, a kind of vision, which means it's not toxic. If something would have been bad, if something would have been toxic, civilization would have banned it, religion would have ignored it, various countries would have completely eradicated it. But what is the big picture I want to start with is, they have not completely banned the use of cannabis. So again, the most important thing is, it is non-toxic. So whenever you think about whatever we use in our daily life, the most important thing we start with is, whether it is beneficial or not beneficial is the second question. The most important thing is, it toxic or not toxic? So definitely cannabis, by the use for several thousand centuries, have validated that it is not a toxic substance. So, but what is the major problem? It has a significant addiction potential. The whole idea about this, from the pharmacologist point of view, it's not toxic, amazing. But what is the problem? It has a significant addiction potential. So now, again, to big things to look into, the difference between hemp and marijuana. Both of them are grown, am I right? Hemp is grown commercially, whereas legally, whereas marijuana is illegal. Hemp products, am I right? Cannabis products has been used as food supplements, seed oil, clothing, agriculture products, and pharmaceuticals, which means they have been used for pharmaceuticals and for cosmetic purpose. Whereas marijuana is mainly used for recreational purpose. And the reason behind that is THC is low in hemp, whereas you have high amount of THC in marijuana. So that makes it addictive. So same way, what is the difference in CBD, cannabidiol, and THC? Cannabidiol, other word is delta 9-tetrahydrocannabinol. Both of them are derived from cannabis. CBD is not psychoactive, whereas THC is psychoactive. Okay, so you can ingest a large amount of CBD, approximately 70 milligrams. It's still safe. It has a broad spectrum of activity. I will come to the pharmacodynamic properties. Okay, how does these compounds exert its activity in the body? Okay, they're going to bind to receptors, CB1 and CB2. We'll talk about that. So now, what do the medical benefits? So I just want to see that these people have been using it for what purpose? Number one, it reduces anxiety, depression, inflammation. It can reduce migraine, which means pain. It can suppress psychosis and seizures. And now they find that it also can suppress nausea. So which can be used for nausea and vomiting. So it can be used for glaucoma, insomnia, muscle spasticity, nausea, and pain. So what is the medical term when you look at these particular diseases? So this particular substance, natural compound, which is cannabis, can suppress hyperarousal. So what do we mean by hyperarousal? Hyperarousal refers to increased neuronal firing. So what is the net effect? It causes hypoarousal.
What do you mean by that? It causes calmness. Very similar to yoga. Yoga is a non-pharmacological approach to reduce the neuronal firing. What does CB do? CBD acts on CB1 or CB2 receptor and suppresses the neuronal firing. So thereby, it can be used in the treatment of seizures. It can be used in the treatment of pain, muscle spasticity. So the big picture is it reduces neuronal firing. That's the concept that I want to emphasize in this particular aspect. So within the US, certain states, they have legalized it, which means people sell cannabis. We have cannabis candies, cannabis chocolates, cannabis in various forms has been administered. So that is used for medicinal use, for adult use, which is recreational, and there are certain states it's not approved. So that is the thing I want to make sure why I'm bringing this point of cannabis when people think about it. Whether we like it or not like it, a lot of countries have approved the use as for recreational and for medicinal purpose. So when you think about cannabis, now let's come into how do we classify cannabis. Endocannabinoids. What do you mean by endo? Which is present naturally in the body, like acetylcholine, like dopamine, like norepinephrine. We do have cannabis. 2-AG, 2-arachidonyl glycerol, which is coming from the same prostaglandin pathway. Anandamide, it comes from a Sanskrit word anandam. Because it's an amide, it is anandamide. Okay, so that is the endocannabinoid, which means we all have endocannabinoids. What do the endocannabinoids do? They bind to the endocannabinoid receptors, which is CB1 and CB2, and they exert a physiological action in the body. So we have cannabinoids in the body. Then the most famous is phytocannabinoids, cannabinoids coming from the plant. We have THC and CBD. Then recently, the whole world knows that we have started synthesizing synthetic cannabinoids. So what is the most important concept of these synthetic and phytocannabinoids? They have a structure analog of 2-AG and AEA, which are endocannabinoids, most important concept. Second one, they bind to the CB1 and CB2 receptors to mimic the effect of endocannabinoids. So what is the big picture here? Synthetic cannabinoids and phytocannabinoids also exert its pharmacodynamic effect by binding to the CB1 and CB2 receptor. That's the big picture. So now, when we say anandamide, what is that? It's a bliss molecule, runner's high. It is an arachidonic acid derivative. That's what I was mentioning. From arachidonic acid, we get prostaglandin, prostacyclins, and we get thromboxane, which is associated with mood enhancement, reduce fear, pain, and anti-anxiety. So in other words, it suppresses hyperarousal, decreases neuronal firing. Okay, so that is the reason in India people have been using it as a holy herb. Okay, they drink it. We know that there are bong shops, and we have seen in a lot of movies that cannabis products have been used. So cannabis in the current society, we use it for recreational purpose, spiritual purpose, commercial use, medicinal use, cosmetic. If you go and look, there are a lot of cosmetic products that has cannabis. We have using it as nutraceuticals because of its non-toxic and less toxic ability. Okay, we are using it as a nutraceutical, and it is also being used as dietary supplements. Currently, people are using to stimulate appetite. People are using cannabis. Okay, so there is a commercial product available now. If you look at YouTube, there are a lot of products which are used as dietary supplements, cannabis-based products. So with regard to the action, we all believe that it binds to the plasma protein. It is absorbed through the oral mucosal route. Okay, it can be absorbed transdermally, intravenously, inhalation. There are a lot of route of administration. If you think from the pharmacy point of view, cannabis has been administered. Cannabinoids, when they reach the plasma concentration, they can exert its pharmacodynamic effect by binding to the CB1 and CB2 receptors. Then it has to be excreted. Okay, biliary excretion, renal excretion. It is metabolized by cytochrome P450 in the liver, and also metabolized by the non-hepatic CYP 450 metabolism. So both cytochrome-based metabolism and non-cytochrome-based metabolism. Why am I talking about that? There's a possibility for drug interaction, but it's biliary excretion and renal excretion. So this is the ADME of cannabis. So as I told you, we have endocannabinoids, phytocannabinoids, and synthetic cannabinoids. Okay, so nabilone and dronabinol, which is being currently approved by FDA. There are more than 600 cannabinoids
when you think about phytocannabinoids. So we are only mostly talking about THC and CBD, but there are other cannabinoids which people are not studied about. There are terpenes which are being used for fragrance. That's what I told you. It is being used for cosmetic purpose. So pharmacodynamically, they bind to the cannabinoid receptors, CB1 and CB2 receptors, and they exert plenty of pharmacodynamic action in the body. Okay, so which means they act at the nervous system, which means they can cross the blood-brain barrier. They have immune function, inflammation that they affect appetite. I told you that currently there's a product in the market for appetite. They affect the cardiovascular function, digestion, bone development, bone density, synaptic plasticity and learning, pain, reproduction, psychiatric diseases. In a big picture, cannabinoids affect every organs in the body. So, big picture, cannabis is well absorbed. It can be absorbed through the skin, through the intranasal, oral, through the IV blood vessel. It is distributed across the blood-brain barrier, which means it has effect on the central nervous system, cardiovascular system, peripheral nervous system. It is metabolized by the liver, cytochrome P450 or non-P450. It is eliminated by the kidney and the bile. So this is the ADME profile of cannabis. So you can see the human endocannabinoid system. It's spread throughout the body. The CB1 and CB2 receptors are spread throughout the body. So how does cannabis exert its action? By binding to the CB1 and CB2 receptors. You can see that CB1 is blue and CB2 is kind of a light pink color. They are distributed throughout the body, which means cannabinoid nervous system is very similar to your neurotransmitter system. It is present throughout the body. So now, when you think about cannabis, the two things that we have to think about is THC has a psychoactive effect, and non-cannabidiol, CBD, does not have a it's a non-psychoactive substance, whereas THC is a psychoactive substance. So when they bind to the receptors, they cause relaxation, euphoria, altered sensation, pain relief, increased appetite, sleep. That's what I was talking about. Currently, there's a new product that is available to increase appetite. People who have less BMI, who are very thin, to increase their appetite, people can use cannabis. So which means it has anti-anxiety effect for pharmacologists, anti-epileptic effect, which can reduce seizure, antipsychotic effect, relieves pain or suppresses pain. That is the reason in Canada, people can grow their own cannabis in their house if they have cancer-related pain. Okay, anti-inflammatory, and now it also has anti-cancer and neuroprotective effect. So the problem that we are facing, if we are looking into a pharmaceutical industry or if you're looking from a pharmacology point of view, the problem is it has interaction. It's being metabolized by cytochrome P450. So based on that, a CYP inhibitor or a CYP inducer can affect the bioavailability. If it is a CYP inhibitor, the drug is not going to be metabolized, so you have increased bioavailability. If it is a CYP inducer, it's going to increase the metabolism of CBD and DHC and decreasing the bioavailability. So one of the most important things is, like most of our anti-epileptic drugs, like our other drugs, the bioavailability depends upon the co-administration of other drugs. So, excuse me. So definitely, from a pharmaceutical point of view, we have to look for drug interaction when it comes to cannabis. So now, globally, it has been used for agricultural use. It has pesticide, insecticide, herbicide property. Commercial use, we talked about that. Still, people use it for holistic use, obituaries, birthdays, religious function. Recreational use, reduce stress, party drugs, used during hiking and camping, hunting and fishing, air sports, skiing and snowboarding. What are the other use? As I told you, nutraceuticals, caffeine tea, caffeine coffee, flavoring agent is being used for fragrance. That's the reason I told you it's used in cosmetic purpose. Thickening agent, preservative. Okay? So, from a big point of view, what are the nutraceutical value? Okay? The leaves, the seed, the flowers and buds, they have been used, okay, for nutraceutical purpose. Cannabis nutraceutical formulations, a lot of formulations are available. They are available as capsule, tablet, lotion, cream, and oil. They have been used as expectorant. They're used to treat bone diseases. They have been used to treat skin diseases. Okay? So, definitely cannabis has a large nutraceutical value.
cannabis as a cosmeceutical product. It has been used, various dermal formulations are available. You have moisturizer, lotions, creams. So we have several soaps, oil, exfoliators. Same way, it's used the treatment for acne, dermatitis, shingles, hives, sunburn, contact dermatitis, diaper rash, rosacea, athlete's foot, and it's also used for basal cell carcinoma. So that is a lead that we took it. I'm going to talk about more about the cannabis and cancer now. So definitely it has been used for as a nutraceutical. It has been used as a cosmeceutical product. And in US, there are currently two products, dronabinol and nabilone. So dronabinol has been used for chemotherapy-induced nausea and vomiting and anorexia. So again, I told you that. What is anorexia? When the patient's BMI, body mass index, is very low, to increase the body weight, it has been used as an appetite stimulant. And it also can suppress nausea and vomiting. And nabilone has also been used for chemotherapy-induced nausea and vomiting. And then we have nabixmol. It's a mouth spray for pain relief muscle spasm. Okay, it's being currently investigated. That is Sativex. Rimonabant is the treatment for obesity and nicotine dependence. It's an antagonist of CB1 receptor. So rimonabant is used for obesity. Other side, it can suppress. It's an antagonist. It suppresses the things. And the most important thing is Epidiolex, which is a CBD. Nothing but it is used for the treatment of different types of seizures. So definitely it has been used for different types of seizures. And then it also can be used for the treatment of glaucoma. It has anti-inflammatory effect, anti-emetic effect. It has a prokinetic effect, okay, which means we can use it for gastroparesis. It has a beneficial effect on the dermal system. We talked about that. Bone strengthening. It reduces arthritis, joint pain, and neuropathic pain. So now, for what are the other research going on throughout the world? It is being used. There, people say that it can reduce the risk for Parkinson's disease, dementia, okay, cognitive disorder, multiple sclerosis, arthritis, fibromyalgia, anxiety, and depression. A lot of studies, clinical studies, and research studies are being held for the observational studies which are used for treating these disease states. So the problem here is the dose. Any substance after a particular amount, it becomes toxic. So the problem is the dosing, and number two is the problem addiction associated with the THC. That's the two things that I just want to make sure that we emphasize on that. So, and somebody asked Buddha, what is a poison? Everything excess in life is poison. Same way, poison is everything, and nothing is without poison. The dosage makes it either a poison or a remedy. So from a pharmaceutical point of view, we agree to that. So, which means cannabis at low dose is not toxic. I just want to make sure that we are on the same page with that. So now, do we have any reports of people dying of cannabis? Is it an opinion or a fact? I just want to make sure that why we are emphasizing that fact is a man fell to death after eating marijuana cookies, all right? But it was not because of marijuana. The guy fell down, okay? I'm just bringing some facts to you. Cannot die from an overdose of cannabis. He fell down. Same way, cannabis are not toxic or non-toxic. Cannabis has shown to improve memory, increase appetite. It has not shown much toxic effect in the brain. It does not cause neurodegeneration or neuronal death. Okay? So it is not, there is no CB1 or CB2 receptors present on the respiratory or cardiovascular center, particularly in medulla oblongata. For example, nicotine, alcohol, they all have receptors in the medulla oblongata. They can suppress the respiratory and cardiovascular function, whereas cannabis, there are no CB1 and CB2 receptors. And then there are a lot of similarities between canine and human non-Hodgkin's lymphoma. This is our recent study, okay? When you think about non-Hodgkin's lymphoma, dog and humans have a very similar profile, the genetic profile and every other profile, the pathology. So what did we do? We want to make sure that do we have the canine cells have any cannabinoid receptors, and then we want to make sure that we can use it for the treatment of canine cancer. So basically, we established that the canine lymphoma cells have CB1 and CB2 receptors, and this is a recent study that we are doing with
all the three cannabinoids. We are studying, looking into the endocannabinoids, phytocannabinoids, and synthetic cannabinoids. And the most important thing that we want to emphasize that, because I cannot reveal more because we are currently looking into this, one of our manuscripts is nearly accepted. We want to say that the cannabinoids, all the three cannabinoids, can affect oxidative stress, inflammation, apoptosis in the canine B lymphoma cells and decrease, or it can be used to treat lymphoma. That's the big picture I want to say. Endo, phyto, and synthetic cannabinoid. All the three cannabinoids can be used to treat cancer. Okay. So non-Hodgkin lymphoma, it's the 5th leading cause of human cancer death. Most is the B cell originated. Am I right? A lot of anti-cancer chemotherapies not very effective. So cannabinoids can be the future to treat different type of cancer. So before I just want to treat, these are the 2 books that we recently published, one for healthcare and one for agricultural materials. So I worked with Dr. Rajiv Kumarji and then with Dinesh Chandra Agrawalji. So this is the books that we have. And to conclude, I would like to thank all these people, Sri Acharya ji, Ved Priya ma'am, Dr. Thakur and Dr. Jaybalan ji. And just to finish, I'm so happy that I could talk a few minutes regarding the pioneer and guru of yoga regulation, revolution, Ayurveda. Still, we need leaders, we need promoters who can make sure that Ayurveda can be reached globally. A lot of people are forgetting about that, the impact of Ayurveda in life and Vedic Indian philosophy. I was so blessed to see Acharya ji last time when I came to India, a visionary of modern health, scholar, industrialist, and philanthropist, who I've been talking about the role of cannabis. I hope when I come next time I can meet him. I would like to sincerely thank all of you for giving me this opportunity. I'm very happy to answer a few questions if you have any questions. Thank you. It's like morning 1:30 here. Good morning from Auburn, Alabama. If you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you, Professor Murali Krishnan Dhanashekaran. I really appreciate your at-length description of cannabis. Cannabis, in this especially Indian aspect, it has been really a stigma in the society, but you really removed that stigma by really showing all the good effects of cannabis. So cannabis, you dealt regarding therapeutics, cosmetics, recreation, future healthcare, how it's from addiction, dependency, toxicity to death, and the substance abuse, history of cannabis starting from the civilization, religions, and then it's non-toxic except, and especially you dealt in detail between the cannabidol and tetrahydrocannabinol and its good effects from different diseases like migraine, pain and glaucoma, and hyperarousal. You get good information on that, and especially your detailed aspect of endocannabinoids and synthetic cannabinoids and phytocannabinoids is really lovely, and we call it as a bliss molecule. Recreation, spiritual and communal, and is commercial to food supplements, its uses. Pain relief, glaucoma, dementia, and especially the lymphoma treatment, you really dealt in very detail. I really appreciate your told regarding all aspects of cannabis, especially application form, lotion forms, as well dermatology usages, etc. But I wonder that just put on something new information if you can really create, and we have the patients. Was it done in animal studies regarding its absorption rate from as a rectal suppositor compared to the dermal or oral, because we have some patients with mouth cancer, etc., and especially lymphoma, etc. In what form of, the second question is, what form is good to be used in lymphoma, B-cell lymphoma? So these 2 questions are just for you. If you can answer, we'll be very happy. Thank you so much. Sir, I just want to thank you for summarizing my whole talk in 30 seconds, sir. Amazing job. Thank you so much, sir. I really appreciate that. Thank you. Sir, with regard to the pharmacokinetics thing, sir, I would like to emphasize it's patient-based. If we are only going to give cannabis alone, oral route is the best route, sir, because it will not have any drug interaction. So from a pharmaceutics point of view, I'm just telling to minimize the drug interaction, to have maximal bioabsorption. We don't have any oral bioavailability problem with cannabis, so it's better to go with oral absorption. Unless a patient cannot take orally, then we have to think about the transdermal formulation or the rectal formulations.
Yeah, this is really good. The good thing that I really had this idea because the patients, we come across a lot of patients because of taking of this gutka, tobacco, a lot of cancer patients we have, mouth cancer, esophageal cancer, stomach cancer, where patients cannot take them orally. So I have appreciate that we have dermal availability, but at the same time in suppository form it is there, and we generally go for vastis. Especially in Ayurvedic treatment, we give for enemas. So in some case, can we really add them transrectally? Does it have any bad effects or toxic effects? If you take the raw ganja, what you call cannabis, in the leaf form or juice. This is just only my thought. If I am wrong, I didn't apologize for that, yeah. Great idea, sir, because the bioavailability will be directly into the blood from the rectal thing. We may not have any other addiction to, other adverse effects too. So it's a great formulation idea, and I think, to be honest, you should patent it, sir. Because cannabis is the future. Whether we like it, in Indian stigmas, you use the right word. People have the stigma, it's cannabis, it's ganja. The word is a wrong word. That's what I just want to emphasize that again. Because if it's like turmeric, if we don't use it, some other country, some other people are going to patent that. So this we have been using in India for centuries, and now we are losing that. So I think that's a great idea. You should apply for a patent for this particular formulation, because when you brought this up for a patient who we cannot administer orally, we want to have that into the blood. So I told you that is an IV formulation too. The pharmaceutical companies will be reluctant to make these formulations, but that's the reason last time when I came, I was talking to a lot of people at Patanjali regarding the role of cannabis for healthcare. So here, healthcare. It's not I'm just using only for medicinal purpose, nutraceutical, dietary supplement. So today, or in the last 2 weeks, they are coming out big with an ad as an appetite stimulant. And we have been using this for years as an appetite stimulant in India. If you go to villages, people have used ganja as an appetite stimulant. So now these people are coming with that. So as you told that, it's a great idea for that novel formulation. I just want to again emphasize the word is a novel formulation. Thank you so much, sir, for this one. Any questions from the have a scientist? question. Yes, please. Yeah, go ahead, please. First of all, thank you, Murli sir, for this wonderful talk. I have a question. Apart from cannabidiol, is there any other non-psychoactive components that is present in the cannabis? Yes, ma'am. As I told you, ma'am, there are around 400 to 500 natural bioactives. That's the word I'm just now using. Natural bioactives. Non-psychoactive one. Yes, ma'am. So it is our duty. I always feel that it's for us to now isolate all these compounds individually, and then see for their pharmacodynamic and pharmacokinetic effect. So definitely we have very similar compounds like CBD in these botanicals, cannabis sativa. Yes. Sir, my next question is there any patentability scope in US regarding the utility of these non-psychoactive components of cannabis for cancer? Yes, ma'am. That is what the current research is going on. That's what, because I'm working with other group, I cannot reveal it. As I told you, the whole goal is now we can synthesize millions of synthetic products. Nobody's going to ask us. See, the problem is legality. When you talk about legality, the problem is THC is a legal problem. CBD is not a legal problem. But once you start synthesizing synthetic compounds, now we know the structure. We just keep on modifying the structure, where we are going to find the most potent structure to bind to the CB1 and CB2. We can become non-selective, CB1 or CB2, or we can become CB1 selective, CB2 selective. So now it's in the hand of the chemist. So we can do a lot of novel synthetic products. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Great. Hello, sir. Thank you so much for a beautiful presentation. It actually invoked my question, which I was just having with respect to the weed which is grown near my hostel, and that is nothing but the cannabis one. So I wish to ask you, sir, we all have cancer cells in our body, and as we know, as we age, the cells might get in a more provoke. So what is the recommended dose, a side effect free dose that one can take for a general purpose with respect to the cosmetic health, the nutraceutical purpose that you spoke about, so which we can use on the normal basis, something which is there in our nearby. And I also understand this fact that not every plant, it could be poisonous as well, right? Herb. So what should be the dosage? Yeah, thank you, sir. Ma'am. We cannot say anything because I don't know the content of the THC and CBD in your
the plant that is growing in your backyard. That's number one. So I cannot say that. If it is a cannabis. That's what I'm saying. Cannabis. When I say that cannabis, I'm right. So that when you say a cannabis, we do not know the natural percentage of bioactives in a botanical. Okay. Vary from your state to the second state. Javalanji is coming from Rajasthan. The temperature is different. The humidity is different. Okay. But then same way, when you say Haridwar, it's totally a different contrast. Alwar and here Haridwar is totally a different environment. That's number one. That is the problem with botanicals. We cannot globalize it based on a particular growth, because everywhere it depends upon the environment, the whole botanical. That is the reason we say it's holistic. So that is where we say that you have to standardize it. As a human being, for breakfast, some people eat 3 chapatis, some people eat 2 chapatis. So now I'm talking about the holistic approach. It is depending upon your body, the age of the patient, the sex of the patient, the body mass index of the patient. So when you ask for a globalized, that kind of a question, it depends upon, and then some people are fast metabolizers, some people are slow metabolizers. When we talk about the drug metabolism, food metabolism, I go back to the Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha. A Kapha person may be eating way less than a Vata patient. A Vata patient may be eating a huge amount of food, but since they are a fast metabolizer, their BMI is different. So to answer to your question, that question is a hit, and you have to practice that. You have to find out what is the right dose. It's a natural product. We cannot assume. That is the whole idea about this Ayurveda. It's a holistic approach. It is an individual-based approach. You cannot just tell that it's 5 milligram paracetamol, 10 milligram paracetamol. You cannot say that with a natural biotic. That you have to understand. That is the reason we use the word holistic approach when it comes to Ayurveda, when it comes to the natural biotic. It is based on. So probably I should check it with PRI to get the ingredients checked with the cannabis, maybe, right? Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Appreciate it. Thank you. sir. Appreciate your answers for everything. We are very thankful for you really enlightening us regarding cannabis. Thank you so much, sir. Hearty thanks. And we have a next speaker now. Excuse me, the sir. introduction of the next speaker will be given by. Just one question, please. We are I may running be short of time, permitted? sir. Yes. Go ahead, sir. Go. Okay. Quick. So the first already our speaker has already explained that it works on epilepsy. Whether any data or any work has done so far, so I would like to go for the reference. Yeah, a question for you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Professor Mulek Krishnan. Both Regarding epilepsy, with the regard dose. to in silico properties of cannabis, it has been proven in animals and humans. It is very safe to use in children with epilepsy. I'm talking, it's one of the, that's what I talked about toxicity. Cannabis was one of, when you think about synthetic anti-epileptic drugs, they have numerous adverse effects. For clinicians, they go crazy. No, sir, excuse me. Whether any study report is available? Both in animal studies and No. Human study. It has not been done to human. Human study? No. In US for the treatment of epilepsy. Okay. Both in children and thing. We have 2-3 products. Okay. Epidemiol, it's a CBD. It has been approved, sir. Okay. Thank you, sir. Plenty of clinical studies. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I appreciate, sir. We have a next speaker now. The details of next speaker will be given by my chairman. Yeah, thank you, Dr. Muralikrishnan, for your wonderful talk. And with regrets for rearranging the schedule, with regrets we invite Dr. Sachin Gupta. Dr. Sachin Gupta is a Shalya Tantra specialist, general surgeon working in Patanjali Ayurveda Evam Anushandan Sansthan, Haridwar. Having more than 13 years of experience, he operated many cases of appendix, hernias, hydrocele, and gallbladder surgeries. His area of specialty is proctology, piles, fistula, fissure, and pylonic sinus. He operated more than 5,000 recurrent cases of many complex fistula in ano or pyloneal sinuses from leading institutions of India by his minimal invasive hybrid laser surgery with Ayurvedic approach, Shara Karma and Shara Sutra treatment. He has nurtured many postgraduate scholars under his guidance at Patanjali Yogbit, Haridwar. Thank you, sir. I would like to welcome you for your talk. Stage is yours, Dr. Sachin Gupta.
Respected Swamiji Maharaj and Param Pujya Acharya Shri, respected dignitaries and my dear students and my colleagues. Today's my topic is on an innovative hybrid techniques to treat benign proctological diseases with Ayurveda and laser surgery. So Maharishi Sushruta is the father of surgery. So they are the mentors of my career. I started my career since 13 years back from this institution, and under the guidance of Param Pujya Swamiji and Acharya Shri, we operated many cases from the renowned institutions of the India, and they are all recurrent cases in proctology. So the center of excellence. So both all the four institutions, that is Patanjali Yogpeeth, PRI, Patanjali Ayurveda College, along with the University of Patanjali, is on the peak of their performing all the procedures and all protocols. So benign anorectal diseases, all of us and all of my students and my colleagues knows they are very common in the society. They are hemorrhoids or piles, they are fistula in ano, fissure in ano, and pilonidal sinuses. Shara therapy is an Indian contribution to the world science. Shara karma or caustic therapy. So it is a minimal invasive Ayurvedic parasurgical procedure, and the Shara is obtained from the ashes of medicinal plants, that is Apamarga, Palasha and Arka extra. So mode of action of Pratisarniya Shara. So it cauterizes the bile mass, causing necrosis and fibrosis and scar formation. The complete wound healing occurs within 21 days of the procedure. You can see this is this image shows before, during and after application. So before application, this is the second degree hemorrhoid, and during application you can see here you can see the Shara application, and you can see this is the necrosis of the immediate necrosis of the bile mass within 30 seconds of its application. So Shara Sutra, everyone knows about. This is very familiar therapy in India as well as abroad also. So it is formed by the 21 coatings of Sanuhi Shira, Appamag Shara and Haridra Churna. So mechanism of action of Shara Sutra in fistula and ano, it analogues to that of wire cutting through a block of ice. So what is laser basically? So how I integrate this laser with Ayurveda, that is Shara Sutra and Shara Karma. So laser is nothing but the light amplification by stimulated emission of radiations. The commonly laser which we use in our proctology practice is 14-17 nanometer wavelength. So types of laser fibers. So it is very important while operating a case of proctology. So we should know all three fibers, that is conical fiber, which is commonly used for hemorrhoids. Fibers for fistula and pilonidal sinus is a radial fiber, and for fissure in ano and cutting of tissues it is the Beer fiber. So principle of laser energy is photoablation, photocoagulation and photovaporization. So my first topic is hemorrhoids. Hemorrhoids are nothing but the inflamed or swollen anal cushion normally present at 3, 7 and 11 o'clock position, as we read in many books, but it is not correct in my opinion. Hemorrhoids can occur in anywhere in the anal canal. In 1975, Thomson comes with the theory of another accessory pile mass, which is commonly located at 6 o'clock position. That is called as accessory pile mass. So conventional procedures in hemorrhoids. During my post-graduation, I taught across with a simple two techniques, that is open hemorrhoidectomy, that is Milligan's-Morgan's technique, and other technique is called as Ferguson technique of hemorrhoidectomy. So though I operate here with the passage of time in 2010 to 2015, I operated these type of cases with these techniques,
And personally, I got the disadvantages. Definitely healing of the patient is very much, but there are some disadvantages of this procedure. That is, it is painful, more bleeding is seen, more tissue trauma, anal stenosis and anal incontinence. So in 2015 to 2020, I come across with another technique, that is, they are called as Shara Karma with bipolar sealer hemorrhoidectomy. In 2015, vessel sealers comes in the market, and I use these vessel sealers for a combined therapy, that is Shara Karma and vessel sealers. Vessel sealer it only coagulates the tissue and cut the tissue without any bleeding. So this is the vessel sealer hemorrhoidectomy. Due to the shortage of time, I will show you the minimal video clips. So minimal invasive hybrid procedure in hemorrhoids. From 2020 to 2023, we invented many procedures in hemorrhoids with a hybrid approach at Patanjali Ayurveda Hospital by the surgery department. They are FG Hall, that is finger guided hemorrhoidal artery ligation. Everybody knows about DG Hall, that is Doppler guided hemorrhoidal artery ligation. Doppler guided hemorrhoidal device cost about 10 lakhs rupees for the single, or we'll use it 10 to 15 times. Then I'll invent with another technique that is called as finger guided hemorrhoidal artery ligation. It is nothing but a ligation of superior hemorrhoidal artery, or the branches of superior hemorrhoidal artery, commonly occurs at 1, 3, 7 and 11 o'clock position. So first procedure is called as finger guided hemorrhoidal artery ligation with laser hemorrhoidoplasty. So this picture shows the ligation of hemorrhoidal artery, and this is the laser hemorrhoidoplasty. You can see the laser energy here. Another second technique is FG Hall with Shara Karma. So this is FG Hall and this is the Shara Karma. FG Hall with LHP and Shara Karma. I come across this with many cases where I did this finger guided hemorrhoidal artery ligation with laser hemorrhoidoplasty. I have seen in the post-op cases there is a bulging of bile masses again with laser techniques. So I invent another technique that is called FG Hall with laser hemorrhoidoplasty and Shara Karma, which is a combination of an innovative procedure which is invented at Patanjali Ayurveda Hospital. So the last technique is called as transanal hemorrhoidopexy with Shara Karma. So Hall technique, it is nothing but a simple technique. This is the Hall suture, which is having 27 mm needle with 5x8 circle and round body, and the length of the thread is 120 centimeter. It is a special thread which is used for the ligation of the branches of superior hemorrhoidal artery. And the needle holder commonly I prefer is the 9 inches needle holder. So before operating any case of hemorrhoid, a surgeon must know about the common appearance, that is the mucocutaneous junction. This is the dentate line and this is the anal columns. So very important with laser. Laser is dangerous when we do not have the knowledge of the mode, fiber, dosage and energy. So for hemorrhoids, the commonly used laser is conical laser. The mode is the pulse mode, and in every pile mass we have to give 150 to 200 joules of energy per pile mass. So transanal hemorrhoidopexy with Shara Karma. This technique is invented, this transanal hemorrhoidopexy is invented by a very much famous colorectal surgeon of India, Dr. Chute's technique of hemorrhoidectomy. So he blocks all the collaterals circumferentially. You can see the 2-layer suturopexy. So these 2 layers blocks all the arterial supply towards the pile masses. And then again in the end I'll come with a conclusion. But the main complication with this procedure is the hemorrhoidal cushion remains the same. So I prefer to do hemorrhoidopexy with Shara Karma and having the excellent results. So I'll play another video.
इसका volume कर देना. Here is the, I am feeling the pulsation, so I'll show the small clips of the procedure. So this is the FG hall, that is finger guided hemorrhoidal artery ligation. I ligate the branch of superior hemorrhoidal artery. So next step is of pile mass before ligation. So very important, these are the very delicate procedures. We have, the handling is very important. Or regress the pile mass. So this is the ligation of superior hemorrhoidal artery, that is a branch of superior hemorrhoidal artery at 7 o'clock. This is nothing but the insertion of laser fiber in the submucosal plane of the hemorrhoid. Then this is the application of Shara, immediate. What happens in my clinical cases when I simply do the laser hemorrhoidoplasty? So there are, in many cases I come across with the recurrences especially. So what I did is I apply my Shara over there, and there is a fibrosis and there is a normal scar formation of the anal cushions. So next topic is fistula in ano. This is very much interesting topic. More surgeons' reputation have been impugned because of the consequences of fistulas operation than from any other operative procedures. Fistula in ano is nothing but a tract which is lined by the epithelial tissue which connects in the anal canal or rectum. Conventional procedures in fistula in ano. When I passed my post-graduation in my college, only 3 procedures are taught to us. That is fistulectomy, that is the complete excision of the tract. Fistulotomy, that is the lay open of the tract. And one more technique is that is called as the coring technique. From 2010 to 2017, I usually perform partial fistulectomy followed by Shara Karma, Shar Sutra ligation in treating complex recurrent fistulas. I'll show some of the cases, that is the complex recurrent cases. So first case I'll show you, this is a right-sided ischiorectal transventric fistula. So what in this procedure I have done, I excise all the tract up to the external anal sphincter muscles, followed by the Shara application. You can see the application of Shara in the cavity and followed by Shar Sutra ligation. Again, this is the recurrent healed left-sided ischiorectal intersphincteric fistula in ano. You can see it is a recurrent case, operated 5 times previously. Then I finally operate this case and you can see the complete healing of the tract here, completely. So again, this is right-sided ischioanal transventric fistulas, the same technique. So this is an interesting case. So this is the scrotorectal fistula in ano with complete healing of the tract. You can see the dissection of the tract is done from the scrotoanal region by avoiding injury towards the urethra. And these are the healing photographs of the post-op healing photographs of the fistula with Ayurveda dressings. So then follow up complex fistulas after fistulectomy and Shara Sutra ligation. You can see the various types of fistulas, that is intersphincteric fistulas, transsphincteric fistulas, supralevator fistulas especially. And you can see this case also, multiple incision has been given before. This case I think 6 times operated. Then I operate this case with the help of my technique, that is partial fistulectomy, followed by Shara Karma and Shar Sutra ligation. There are again follow-up of complex fistulas after window technique and Shar Sutra treatment. You can see the multiple fistulas here. In 2017 and 2020,
Again, I come with the invention of another technique that is called as window coring followed by Sharsutra ligation, scrotoanal fistulas especially. So you can see this dissection of the tract from scrotum to perineal region, and then I made one concept that is a window technique. That is, window technique is nothing but the lift technique. So with this technique, we made a intersphincteric window in the intersphincteric space, and the Sharasutra, duration of the Sharasutra becomes very limited. With my patient since in last 10 years, the main concept of the procedure is the pain. How much pain you give to the patient after surgery, that is very important. So you can see in this technique, there is small wounds and the scar mark of the procedure. It is very minimal with the last procedures. So when laser comes in the market, I attended many conferences with colorectal surgeon and come to conclusion with another technique that is a hybrid technique in fistulas. So hybrid procedure is nothing but the synergetic combination of two or more procedures for increasing their efficacy to generate a better outcome. So the technique which is invented in Patanjali Ayurveda Hospital by the surgery department is an innovative hybrid technique to treat complex fistula in ano. That is window fixation, laser ablation followed by Sharsutra ligation. So you can see this picture. This is the intersphincteric space, and I create a window here. You can see this is the tract. So this device is the fixation device, and this is the laser ablation of the tract, and finally the Sharasutra. So it is a combination of all the three procedures, that is window, laser ablation and Sharsutra ligation. So what is fixation? So these are the circular blades you can see with a diameter of 3 mm, 4 mm, 5 mm, and guide, probe and base plate. Again, the protocol of the procedure in case of fistulas with laser is very important. You should know the fiber. So it is the corona 360 degree. The mode is the continuous mode. For example, if the tract is 5 cm long, we have to give 500 joules of energy. So procedure, I'll show a complex fistula and ano with an hybrid approach. It's got some 4 o'clock and another opening at 11 o'clock. You can see, so this is a complex anterior horseshoe shape in fistula in female. One external opening. You can see it is a form of horseshoe shape fistula. And so you can see the dye is coming. So it is confirmed by the dye test. Clearly see the dye is coming from both the openings. So it attains the shape of horseshoe shape type. So this is nothing but a window, that is the dissection in the intersphincteric space. So very careful while doing the dissection. Here are the external sphincter muscles. So I divide this intersphincteric space and I'll show you the tract. This is the tract inside. The whole tract is like this, and this is the intersphincteric space tract. So what I did is I just divide this tract. Both the sphincter, that is internal and external sphincter. So I'll put the main, that is Sharasutra, from here to here, very small, that is around 1 to 1.5 centimeter thread inside, and rest of the tract from here to here I'll deal with fixation. You can see the mug inside the tract. This is the entry towards anal. So here is the hybrid procedure. You can see this is the tying of Sharsutra inside the main internal opening, that is the main crypt of the disease. Use your fixation device like this inside the tract. So this is the insertion of fixation device in the remnant fistulous tract.
So these are the coring blades, especially what I'm using for coring of tract. So it should be rotated in a clockwise direction always. So you can see inside there is a tract. You can see this is the tract which is cored with the help of this coring device. Thumb forceps. Piece here and remove this. So you can see the linear tract which is coming like this. So this is a specimen of cored tract. So it is cored from both the side, from right and left, by avoiding injury to the external anal sphincter muscles. So you can see after fixation from both the sides, you can see this tract. This is again circular tube-like structure which is coming out. So this is the minimal invasive intervention in cases of fistula and ano. Then the laser fiber is put from external opening to the intersphincteric space. And laser energy is given. Here is the technology and Shara Sutra. You can see I will go by both the way. So what this laser will do? This laser evaporates all the watery content from the epithelial tissue. So you can see here. Normally if I'll do this procedure normally with Shara Sutra technique, it will take more than 6 months to heal. And there is a lot of pain to the patient. I'll show you the follow-up also. So follow-up for 1 month. You can see how nicely granulated tissue in the post-operative with a very minimal Shara Sutra inside the tract. So the theory behind the fistula is only the main internal opening. We have to deal with the main crypt. Rest of the tract we can deal with any technique. So you can see finally after 1 month there is very little scar marks as compared to my previous surgeries. So hybrid procedure, the outcome. So in modern science there are various procedures. One is called lift, weft, FILAC and DLPL. All the procedures are done in this institution with many recurrences. I have seen many recurrences in these techniques. The preferred technique is the window fixation, laser ablation followed by Shara Sutra therapy. So I got 100% results in this procedure. So what is fissure? Commonly all the people know a very painful condition. So it is the crack or tear in the vertical axis of squamous lining of anal canal. You can see here is the fissure. So the common surgical procedure. So previously what we do is that is called Lord's anal dilatation. It is nothing but the forefinger dilatation of the anal canal. Nowadays this procedure is totally banned by the American Society of Colorectal Proctology. The recommended procedure is the anal dilatation with the help of dilators. So you can see these dilators are used nowadays. With these dilators there is no bleeding, no tearing of anal canal, and there is no distortion of the anatomy of the sphincter muscles. The procedure right now I preferred with closed laser internal, that is lateral internal sphincterotomy, that is from medial to lateral. So I'll show you some, I'll give you the idea how to do. So this is the intersphincteric groove. So we have to just identify first the intersphincteric groove. So this is a tumescence with adrenaline and saline up to the dentate line.
This is the negotiation of laser fiber inside the dentate line. We have to just cut the fibers from medial to lateral. So it is very simple procedure. It relieves the spasm immediately. You can do also in local anesthesia. So pilonidal sinus, it is the epithelial tract, commonly occurs in the intergluteal fold. So in this there is a accumulation of hair inside the cavity. So conventional procedures in pilonidal sinus. I have done this procedure up to 2010 to 2020. This is nothing but the complete excision of the tract up to the sacrococcygeal fascia, followed by Shara Karma, and this is a specimen of pilonidal sinus. So minimal invasive hybrid technique in pilonidal sinus invented at Patanjali Ayurveda Hospital is laser pilonidoplasty, followed by Shara Karma and Sharsutra ligation. This case is the one of the difficult case I have faced in my 13 years of practice. I'll show you the case. Excuse me, doctor. Excuse me, doctor. A new case, that is a pilonidal sinus. You can see here. You can see the history of the patient. This patient was operated 5 months back in Faridabad in some surgical hospital. What they did for this pilonidal sinus, they just excise all the tract. This is the recurrent case which is operated at Sarvodaya Hospital in Faridabad by. She is a 20-year female patient, underwent 3 times surgeries of pilonidal sinus. So I prefer here is both the techniques, that is laser and Ayurveda. I'll show you the next slides. So follow up, I have done this laser pilonidoplasty with Shara Karma and Sharsutra ligation. This patient is healed within 6 weeks. So the question is, why laser and Sharsutra? Sharsutra is only for drainage purpose, not for cutting. You can see after laser pilonidoplasty, I just put these Sharsutras for drainage. Once the wound is granulated, I take off all the Sharsutra out, and this is the final picture of the wound after complete healing. So post-operative management protocol, that is same for almost all the proctological are same. So advantages of minimal invasive hybrid procedures in proctology, always less is best, because there is a minimal pain, bloodless, short hospital stay, do not require long-standing dressings, and no chances of incontinence even in complex fistulas. Definitely yoga and pranayama is also helps in anorectal diseases. It relieves the constipation and maintain the circulation around the anal area. So there are 4 or 5 slides I want to speak, that is generating the generations. So this is a symbol of hand-to-hand surgical proctology training at our institution. The story of success. To become an expert in any profession, you need 10,000 hours of practice over 10 years. But with a good mentor, the time reduces to 5 years. Surgeons are not born, they are made at Patanjali Yogpit with the help of hand-to-hand surgical training. Perfection is not attainable, but if we chase the perfection, we can catch the excellence. So work in progress, time to refine and reconstruct. The most dangerous phrase is, we have always done it this way. This is said by Grace Hooper. Thank you. Thank you, Dr. Sachin Gupta, for wonderful presentations, and you really took all of us into the operation theater and also trained the young surgeons, I think, in proctological cases. I appreciate your presentation, especially in Kshara applications and as well as Snuik Kshara applications, etc., for preparation of the Kshara and the hemorrhoids. You are dealing with such a beautiful techniques you have shown
especially the FGHAL, that is your finger guided hemorrhoidal artery irrigation. They have shown really the real way of how to do it with the laser therapy, with the new invented technology, as goes with our present scenario of this conference, that is technologies have been used, how it has been used. So you are one step ahead of Sushruta in using the laser therapy in hemorrhoids. Yeah, and then we appreciate the videos of transhemorrhoidal plexi and laser techniques, proctological procedures, fistula procedures, and fissure in ano, pilonidal sinus, treating pilonidal sinus. And the last, you are summing up with the generating the generations for surgeons. Then surgeon is not a born one, but a made surgeon. And also the simple formula of the time factor, what you told, that any mastery you get for 10 years can be guided with the best master. It will come down to 5 years. A wonderful formula. We appreciate. And any questions, please, for him, please. We lack time. Respected We have to go sir. for lunch. Yes. So I had this one question which intrigued me throughout this presentation. Being a like yoga practitioner, we have this philosophy of just being as far as possible from the surgery. So what I suggest to my patients is using coconut oil with some amount of camphor, which is useful, and I found it useful for myself as well for hemorrhoids, fissure, fistula also. So what is your experience upon it, sir? Because what I found, Ashwini Mudra helps to improve the blood circulation and timely allow that extrusion which has happened to come inside. However, the conditions that you had showed was far beyond to be controlled, but still, what was your experience, and had you done anything of suggestions of this part of coconut oil? Because this is very, very beneficial as per my experience. Yeah, thank you, sir. See, your question is very right. Depending upon the degree of hemorrhoids, the always management is decided with the degree of hemorrhoids and how acute it is, basically. Most of the, in hemorrhoids, mostly we treat with the Ayurvedic medicine, and as you said, coconut oil. It is very much beneficial. I already use in my practice also. And the bastis what we perform here in Patanjali Ayurveda Hospital, that is a mixture of all the oils with the coconut, ma, narayana, jatyadi tela, yashti madhu tela. We use aloe vera also as a, it gives this anti-anesthetic, and it gives the anesthetized effect to the anal cushions. So coconut oil is very much useful while treating, especially inflammatory hemorrhoids. Any query? Any more questions, please? 1 minute. Thank you, Dr. Sachin. Your fine presentation, no doubt. That is in your practice, in your teaching, everything all right. But my one question, whether you have advocated any medicine in addition to your Kharasutra or not? If yes, what are those medicines? See, sir, I already told all the hemorrhoids does not need surgical interventions. Number one. Number two is, depending upon the degree of hemorrhoids, I already told there are 4 degrees. My question is very concise, very simple. Whether any medicine for inflammation and pain have you given to the patient? Yeah. What are they? Yeah. Definitely, in the post-op period, we are giving this curcumin gold to the patient, the tablets in the tablet form, and Triflagoglu also. And Gandhaka Rasayana commonly we are prescribing here. Good. Number 2. And for laxative, we have Shuddhi Churnas of Patanjali and Isabgol Husk. We have stole For software. any emergency issues, have you used in modern medicine? Yeah, we use. We have all protocol in our hospital. We have modern surgeons with us. We have modern anesthetists with us, and a good team with us while operating these such of cases. So anesthesia is a must for Kharasutra. So see, sir, time is totally changed right now. Okay. 1 minute. Whether any thought or any research bent of mind has been applied instead of anesthesia, can we grow any Ayurvedic medicine? Whether any trial, whether any research, whether any thought even come out from your brain till today? See, sir, when you operate a patient, I think being a surgeon,
being a surgeon, we need relaxations. You cannot touch a patient. You cannot give such a touch while operation. Was it in our ancient time like this, anesthesia? See, sir, I was born in 1981. Okay. I just talk what I have seen in my practice. मोहचूर्णेन मोहयित्वा तत्र शल्यकर्मं क्रियात् निशाचरेभ्यो रक्षस्तु नित्यमेव ख्यातातुरः. So finally that is deliberated by Prasruta. Once minute. Number two, we have never taken any step, particularly the surgeons of Ayurveda all over India, what I say. So is it not essential nowadays to go for this? So definitely, search has to be So done. probably I request you Pardon? and your team Yes. that tomorrow let us stop this anesthesia Yes, sir. and develop our, that is Ayurvedic anesthesia method. Definitely. There is a particular method of treatment in Charaka Samhita also, where it has been clearly mentioned ki how to niruddha vata. Vruddhya vishyandanat pakat, shrota mukha vishodhanat, koshthan muktva vayo sakhat janti vayosya nigrahat. Beautiful sloka, in which the first last point is important and it is applied in all sorts of diseases in Ayurveda. So I hope in future, if I get any chance to come to Patanjali, he is Yes. doing a lot, no doubt. But I should listen to first of in India, anesthesia churna or moha churna or shanganasana churna or vadruddhakra churna. Thank you. Thank you so much. So, in this aspect, regarding this Dr. Nanda's message, I have practically seen, especially in these pathological cases, the small surgeries, especially hemorrhoidectomy, then as well as in the fistula. My senior, and he's a surgeon and he's a professor of surgery, Celia. He used to do the surgery with Jatamansi Quat, half a bottle, 250 ml of Jatamansi Quat. Patient was given an empty stomach. Patient used to sleep, he used to do the surgery, and he used to get up without anesthesia, for information. I have seen practically cases happening in Hyderabad College. Yeah, but at the same time, we need to use the technology, and comfort is more need for the humanity. We really appreciate the talk given by Dr. Sachin Gupta ji, and we thank everybody for cooperating on this. We'll go for the next speaker. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you. And the last speaker we are inviting Dr. Sanjeev Kumar. Sir is presently working as a principal scientist in biomedical applications, associate professor at CSIR, Central Scientific Instrumentation Organization, Chandigarh. He is a PhD in biomedical engineering from IIT Delhi and awarded with CSIR Raman Research Fellowship to work at Florida International University, Miami, Florida, USA. He has got around 40 international publications and 30 international national conference proceedings. He has been awarded with IETE Hari Ramji Toshniwal Award from IETE New Delhi, National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities from Sri Pranab Mukherjee, and many more. We would like to call upon Dr. Sanjeev Kumar. Sir, please carry on. Very good afternoon. With one small interruption, sir. With the permission of principal, I inform all the PG students not to leave the hall. There will be financial penalties for you if you leave, especially the PG students. Sorry for interruption, sir. Please start. Respected Swami Ramdev ji, Acharya Balkrishnan ji, and Madam Dr. Vedpriya, dignitaries on the dais, participants, scientists, and I would like to thank all the organizing team for giving me this opportunity to be here to present whatever the work I have done in the biomedical domain. बाय आर्ट मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं मशीनों की ही बात करूँगा। तो हम इंजीनियर्स जब एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो रोग नहीं, तो हम सिग्नल से रोग को पहचानने की क्षमता से देखते हैं कि बॉडी कैसे दिखा रही है कि हाँ उसको इलाज चाहिए।
तो बात करूंगा बायो सिग्नल्स की, कि बायो सिग्नल्स होते क्या हैं और उनको किस तरह से रोगों के इलाज के लिए यूज किया जा सकता है। टाइम कम है तो थोड़ा सा जस्ट इन फ्यू seconds I will give the introduction of my organization, that is CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, located in New Delhi, having around 38 laboratories throughout the country with about 4,600 scientist staff and 8,000 technical staffs. And my lab is Council of Central Scientific Instruments Organization located in Chandigarh, which was planned by the Planning Commission of India in 1959 and moved to Delhi, planned in Delhi and now is in Chandigarh, with the mission to research in the strategic applications specifically for the instrumentations. And this is basically the core strength of CSIO, in which different field we are working, and I am working in the biomedical instrumentations. So let us start with the biomedical. What exactly is biomedical? It deals with the wide spectrum of life sciences, that is plant, animals, insect or nutshell in all living organism. And after this study on the human beings only, it's called as biomedical instrumentation. And biomedical instrumentation devices that can be used to make measurement of biological or medical quantities and give quantitative values. And medical devices hardware, and that electronics hardware that is used for understanding, accessing, manipulating and treating with the living things. So if you'll see the healthcare approaches, on the left hand side you can see that was the classical approach for the treatment. We had a patient come with the treatment and physician, that physician known as the Vaidyas in earlier time, nowadays also. And with the symptoms, when the patient was telling the symptoms to the Vaidyas, based on that the Vaidyas were able to find out कि किस तरह की बीमारी है और उसके बेसिस पे इलाज किया जाता था। अगर आज के टाइम पे देखें, राइट हैंड साइड मॉडर्न अप्रोच, पेशेंट है, सिम्टम भी है, सिम्टम्स और पेशेंट के बीच में और बीच में फिजिशियन के बीच में आज की डेट में एक इक्विपमेंट आ गया। तो बेसिकली हम लोग उस इक्विपमेंट्स के लिए काम करते हैं, इक्विपमेंट में काम करते हैं, ताकि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वैद्यज हैं, उनको सपोर्ट मिल सके। अगर आप हिस्ट्री देखें, इंडियन ट्रेडिशन मेडिकल प्रैक्टिस में वैद्यज वाज ट्रीटिंग द पेशेंट्स विद द हेल्प ऑफ द सिम्टम्स। तो जो पहला सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आया था, दैट वाज द स्टेथोस्कोप, जिससे दिल की धड़कन को, लंग साउंड को सुना जाता था। और मेजर ब्रेक थ्रू जब हुआ, जब पहली बार किसी बायो सिग्नल जो हार्ट से सिग्नल आया उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देखा गया और उसको बोला गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दैट वाज द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंजीनियर हूं तो सिग्नल्स के माध्यम से ही बॉडी को देखता हूं। तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर अगर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरह के हैं, सबको देखा जाए तो हर फिजियोलॉजिकल सिस्टम अपने में एक सिग्नल दिखाता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूरस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हर सिस्टम अपने काम को प्रकट करता है कि किस तरह से सिग्नल्स वो दे रहा है और किस तरह के रोग के अंदर वो है या स्वस्थ है। तो अगर हम सिग्नल्स को देखें तो टोटल 6-7 अलग अलग तरह से डिवाइड किए गए हैं। बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल, अगर हम किसी भी बॉडी के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल उससे देखते हैं तो उसे कहते हैं बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मायोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, अलग अलग तरह के। बायोअकॉस्टिक सिग्नल, अकॉस्टिक साउंड, मतलब अगर हम साउंड की मदद से देखते हैं तो बायोअकॉस्टिक सिग्नल, जैसे फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। बायोमैकेनिकल सिग्नल, अगर हम कोई मैकेनिकल मूवमेंट की तरह से देखते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, सांस ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, हमारा एब्डोमेन मूव करता है। बायोकेमिकल सिग्नल, ब्लड के अंदर कोई केमिकल कंपोजिशंस है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बायोऑप्टिक सिग्नल्स, कि अगर ऑप्टिकल के तरीके से हम ब्लड के अंदर की कुछ कंपोजिशन निकाल सकते हैं, जैसे कि पल्स ऑक्सीमेट्री। बायो इम्पीडेंस सिग्नल, कि जैसे हम मान लीजिए सांस लेते हैं
तो सांस से क्या होता है, हमारी स्किन जो है एनलार्ज, स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है, उससे इंपीडेंस चेंज होता है, तो उसके तरह से हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन अगर की जाए बायो सिग्नल्स की तो दो तरह से अलग अलग मेन होती है, या तो इंजीनियर्स अपनी नज़र से देखता है और एक डॉक्टर अपनी नज़र से देखता है। इंजीनियर्स देखता है कि क्या जो इक्विपमेंट बन रहा है या जो बनाना है, क्या वो इंडिकेट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, डाटा लॉगिंग है, एनालिसिस है, या उसका कंट्रोल है या नहीं है। और अगर मेडिकल में देखा जाए तो डॉक्टर देखता है कि वेदर इज अ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, थेरापेटिक इक्विपमेंट्स और रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट्स। पर अगर आप इन दोनों को देखो तो ये सेम ही है। अगर एक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होगा तो उसमें भी इंडिकेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ये सब होगा, बट डॉक्टर की नज़र अपनी, इंजीनियर की नज़र अपनी, और इन दोनों के तालमेल से ही डॉक्टर और इंजीनियर दोनों के प्रोफेशंस अच्छे चलते हैं। सिंपल एग्जांपल जो मैं मार्केट में रहे समझाने के लिए कि बायो सिग्नल्स को यूज कैसे किया जाता है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है पॉलीग्राफ, जो यूज किया जाता है सब्जेक्ट की झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हमारे बॉडी का एनाटॉमिकल फंक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी की सोच कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो जब क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट को किए जाते हैं तो उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस मिलते हैं। वो चेंजेस जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर चेंज होना, रेस्पिरेशन पैटर्न बदलना, स्किन का कंडक्टेंस चेंज हो जाना, पसीना आ जाना जिसे कहते हैं, या बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाना। तो जब क्वेश्चन किए जाते हैं उस टाइम पे इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके देखा जाता है। एट द सेम टाइम इट इज मेजर्ड कि जैसे ही क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हुआ उस टाइम पे क्या चेंजेस आए। तो अगर वो चेंजेस एबनॉर्मल हैं, वैसे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ शायद सब्जेक्ट झूठ बोल रहा है। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में अगर आप देखें, डायबिटीज मेजरमेंट के लिए हमारे पास मार्केट में है, जैसे कि ये मैंने अभी बताया था कि ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं, बीपी मेजरमेंट के लिए हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री है। थेरापेटिक्स में अगर हम देखें, मेडिकल वेंटिलेटर्स है जो एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, मेडिकल लाइनक है जो कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, और हैं रोबोटिक सर्जरी, लेजिक सर्जरी, समथिंग लाइक दैट। बट ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो रेडिली मार्केट्स में आ चुके हैं और जिन्हें डॉक्टर जनरली यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो आने वाले हैं और जो डॉक्टर्स को मदद करेंगे आने वाले टाइम पे। एक ऐसा ही टॉपिक हमारे सामने आया, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एनेस्थीसिया जब पेशेंट को दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो डॉक्टर चाहता है, सर्जन चाहता है कि पेशेंट जो है 4 मिनिमम स्टेट्स में बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। पहला, थ्रू आउट द सर्जरी वो सोया रहे। दूसरा, उसे कोई दर्द ना हो। तीसरा, वो कभी भी मूव ना करे सर्जरी में। और चौथा, कि सर्जरी के दौरान जो भी बातें हुई उसे कुछ याद ना रहे। तो उसी तरह के कुछ एक एप्लीकेशंस पे हमने काम किया। एनेस्थीसिया का आप सब लोग जानते ही हैं 3 तरह का होता है, लोकल, रीजनल एंड जनरल। और ये 4 कंपोनेंट जो है एनेस्थीसिया के टाइम पे कंट्रोल किए जाते हैं। हिप्नोसिस की वो सोया रहे, एनाल्जेसिया उसे दर्द ना हो, न्यूरोमस्कुलर कि वो मूव ना कर सके, और एमनेसिया कि उसे थ्रू आउट द सर्जरी जो हुआ उसे कुछ याद ना रहे। बट क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर इनका असेसमेंट कैसे करेगा? ये करता है। अगर मान लीजिए पेशेंट पूरी तरह से सोया हुआ है और उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी अच्छे से दिया गया है और उसे बाई चांस किसी वजह से पेन हो रहा है तो वो बता नहीं पाता। तो ये कुछ क्लिनिकल साइंस हैं। क्या तो वो मोटर एक्टिविटी करेगा, स्वेटिंग होगी, पिपल डायलेशन, लैक्रिमेशन, फेशियल ग्रैस्पिंग लाइक दिस, तो इससे कुछ पता लगता है। फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ब्लड प्रेशर, प्लाज्मा एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन, एक्सपायर्ड एनेस्थेटिक गैस कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इनसे भी पता लगता है। बट अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी या सर्जरी के बाद या तो पेन फील कर रहा है, बता नहीं पा रहा है, या पेन फील कर रहा है, पता नहीं लग रहा है। तो वो कारण को जानते हुए इस काम को किया गया कि डॉक्टर्स के लिए क्यों ना हम एक ऐसा इक्विपमेंट बना सकें जिससे यह पता लग सके कि पेशेंट की इस टाइम स्टेट है क्या। वर्ल्ड वाइड ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हमारा दिमाग पूरी बॉडी को, जैसे कहते हैं ना मास्टर कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ऐसा है, तो हर तरह का सिग्नल भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने अपने दिमाग को, ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते जो समझ में आया ये कि बेसिकली हमारा दिमाग 2 डिफरेंट हेमिस्फीयर में है, लेफ्ट एंड राइट। और
each hemisphere is further divided into 5 different domains, that is frontal, central, parietal, occipital and vision. और हर हेमिस्फीयर का अपना एक काम है. जैसे फ्रंटल का है इंटरेक्शन, रिएक्शन, जजमेंट, इमोशन एंड मोटर एक्टिविटी, मेनी मोर, दीज आर फंडामेंटल. सेंट्रल, parietal, visual attention, perception, voluntary movements, sensations, occipital, vision, and temporal, hearing, memory, visual perception and categorizing of objects. तो जब हमने हिप्नोसिस और एनाल्जेसिया के लिए काम करना शुरू किया तो हमने कुछ इस तरह से ईईजी रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्योंकि ब्रेन जो सिग्नल जनरेट करता है, ब्रेन की एक्टिविटी से सिग्नल जनरेट होता है, उसे हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं, जिसे सरफेस से और निडल इलेक्ट्रोड से निकाला जा सकता है. अब पेशेंट को निडल तो नहीं लगा सकते थे, तो हमने सरफेस इलेक्ट्रोड्स पे काम किया. फ्रंटल रीजन, सेंट्रल, पैराइटल रीजन से हमने डाटा रिकॉर्ड किया और उस डाटा को हमने एक्सेस करने की कोशिश की. बेसिकली डाटा जो है 3 डिफरेंट डोमेन्स में रिकॉर्ड किया गया. हॉस्पिटल वार्ड्स में जब पेशेंट बिल्कुल अवेक है, जैसे बेसलाइन डाटा कहते हैं, क्योंकि किसी एक पेशेंट का डाटा दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बेसलाइन उसी पेशेंट का चाहिए. सेकेंड, ऑपरेशन थिएटर में जब वो पेशेंट एनेस्थीसिया जोन में है, सर्जरी हो रही है. और थर्ड, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में जब सर्जरी के बाहर वो आया है और माइट बी चांसेस कि उसे कोई पेन फील हो रही हो. तो जब हमने 3 उसमें डाटा रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने कुछ 21 पैरामीटर, इंजीनियरिंग के 21 पैरामीटर निकाले जो ये बता सकते थे कि पेशेंट किस स्टेट में लाइज कर रहा है. अभी 21 के 21 पैरामीटर देख के हमें पता लगा कि सारे पैरामीटर्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, बट कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं हिप्नोसिस स्टेट के साथ और एनाल्जेसिया स्टेट के साथ. तो उनको कुछ प्रूव करने की कोशिश की. दीज आर द 3 मेथड्स जिसको हमने यूज किया इंजीनियरिंग वे में, और इनसे प्रूव करके टोटल 5 पैरामीटर्स ऐसे निकाले जो उन्हीं 21 में से हैं कि ये पैरामीटर्स डायरेक्ट इंडिकेशन करते हैं कि पेशेंट कितना सोया हुआ है फ्रंटल रीजन से. अब उन पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करके जितने हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करके एक नंबर डॉक्टर को दिया, क्योंकि अगर ये पैरामीटर्स एक डॉक्टर को दिखाए जाएं तो डॉक्टर इतनी अच्छी तरह से इन पैरामीटर को नहीं समझ सकते. जनरली आप किसी भी इक्विपमेंट्स में देखें तो डॉक्टर्स को नंबर्स ही जनरली रहते हैं इक्विपमेंट्स में, ताकि उन नंबर के माध्यम से वो पता लगा सके कि यस किस स्टेट में है पेशेंट. तो ये नंबर एक जो जनरेट किया गया, आप देख सकते हैं 48. तो नंबर बेसिकली डिवाइड किया गया 0 to 100 इंजीनियरिंग डोमेन में. 100 मीन्स पेशेंट इज फुली अवेक एंड 0 कि देयर इज नो ईईजी, एंड सेंटर लाइन इज 50 एंड 50 से ±10 दैट इज 40 to 60 कि जब पेशेंट का इंडेक्स ड्यूरिंग द सर्जरी फ्रंटल रीजन से 40 से 60 के बीच में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट एक प्रॉपर हिप्नोसिस स्टेट में है, मीन्स वो अच्छा सोया हुआ है. तो बेसिकली ये पैरामीटर्स की मदद से इस नंबर को कैलकुलेट किया गया, और इस टाइम पे हमने जितने एनालिस्ट की हेल्प ली उन सबका धन्यवाद. फिर क्वेश्चन आया कि जब पेशेंट सोया हुआ है या पेशेंट का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज है, हो सकता है उसे तब दर्द हो रही हो, या आफ्टर द सर्जरी पेशेंट कह रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उसे दवाई भी दी जाती है. या ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली फिनोमिना होता है कि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे तो दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे उसे दवाई देना ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि एक स्टडी यूएस में हुई कि ज़्यादा ओपियोइड्स, ज़्यादा पेन किलर्स की वजह से भी डेथ हो सकती है. लेकिन पेशेंट की साइकोलॉजी को कैसे दूर किया जा सकता है? उस टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट साइकोलॉजिकली कह रहा है मुझे पेन है, बट उसे पेन नहीं है, डॉक्टर समझ सकता है इक्विपमेंट से या अपने एक्सपीरियंस से, तो उस टाइम पे जनरल एक सलाइन देते भी हैं तो पेशेंट समझ जाता है कि मुझे कुछ दवाई दी गई है तो उसकी सर्जरी साइकोलॉजिकली पेन भी दूर हो सकती है. हमने कुछ पेन के स्टिमुलस अपनी लैब में विद प्रॉपर अप्रूवल्स लिए, लाइक हल्की इलेक्ट्रिकल करंट से पेन देके देखा, थर्मल पेन देके देखा, मैकेनिकल पेन पिंच करके भी देखा, और हो आइस क्यूब कोल्ड वाटर टाइप जैसे बर्फ को हाथ में पकड़ लेना कुछ देर के लिए तो दर्द होने लगेगा. तो उस समय पे हमने फिर से सिग्नल्स जो रिकॉर्ड किए पेशेंट के पैराइटल रीजन से, और आफ्टर द सर्जरी वी ऑल्सो डन द सेम. और उस टाइम में पेशेंट से पूछा गया जी, ये नॉर्मली जिसे कहते हैं विजुअल एनालॉग स्केल, एक मेथड अपनाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा एक्सपीरियंस के लिए कि कितना पेन हो रहा है. 10 मतलब बहुत ज़्यादा, 0 मतलब कोई पेन नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स जो है एसेस करके पेशेंट को दवाई देता है. तो हमने जो फाइंडिंग्स ली कि जो पैराइटल रीजन है जहाँ पे सेंसरी नर्व्स एंड हो रही हैं,
वहां से जो ईईजी का सिग्नल है वहां से लिए गए ये 3 पैरामीटर, इंजीनियरिंग के पैरामीटर्स, ये पेन को बताते हैं, जिसके बेसिस पे एक ये इंडेक्स, पेन इंडेक्स इजाद किया गया, जो ये बताता है कि पेशेंट नो पेन कंडीशन में है, मीडियम पेन कंडीशन में है या एक्सट्रीम पेन कंडीशंस में है। तो बेस्ड ऑन दैट डॉक्टर कैन गिव द ट्रीटमेंट। अब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की समस्या ये भी होती है कि वो एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कई सारे ऑपरेशन थिएटर्स में बिजी भी रह सकता है, और दूसरी जो पेशेंट को ड्रग दी जाती है वो पेशेंट के बीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, उसकी उम्र कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, जेंडर क्या है, उसके बेसिस पे उसका वेट कितना है, उसके बेस पे कैलकुलेट की जाती है। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट अगर मान लीजिए किसी ड्रग पे है या कुछ पे है, तो समटाइम वो कैलकुलेटेड ड्रग काम नहीं करती, उससे ज़्यादा वैल्यू की देनी पड़ सकती है। बट उसके लिए फिर क्या आया कि अगर हमने पेशेंट की स्टेट को एसेस कर ही लिया है, तो क्या हम डॉक्टर्स के लिए एक वैल्यू और डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी पेशेंट की वैल्यू ड्रग की इतनी हो जानी चाहिए कि ये प्रॉपर उस एनेस्थीसिया जोन में रहेगा। तो उसके लिए फिर क्या किया, 2 पैरामीटर, एक पेशेंट का इंडेक्स जो रियल टाइम में आ रहा है और दूसरा इंडेक्स जो डॉक्टर सेट करना चाहता है, से 50, उन दोनों का कंपेयर किया गया और पेशेंट की स्टेट को रियल टाइम एक्सेस करके देखा गया और ड्रग की क्वांटिटी को कैलकुलेट करके डॉक्टर को बताया गया कि हो सकता है इस पेशेंट को इतनी ड्रग दी जाए तो इस स्टेट में आ जाएगा। तो यहां देखें कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, टारगेट इंडेक्स है जो डॉक्टर की तरफ से रहता है और रियल टाइम इंडेक्स जो पेशेंट का खुद का इवेल्युएट होकर आएगा, दोनों के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हुए कि कहाँ हमें पहुंचना और कहाँ हम हैं, कितनी ड्रग रखी जाए कि वहां पहुंचेंगे। तो ये एक रियल टाइम सिस्टम अगर आप देखें, ऊपर इंडेक्स की वैल्यू है, बीच में सेंट्रल लाइन 50 सेट किया गया और नीचे ड्रग की वैल्यू है। अगर आप देखें कि इंडेक्स जैसे जैसे ड्रग की वैल्यू बढ़ रही है, इंडेक्स 100 से टुवर्ड्स 50 की तरफ आ रहा है और जैसे ही वो 50 क्रॉस करता है ड्रग की वैल्यू जो है कम होनी शुरू हो जाती है कि अब पेशेंट को 50 में मेंटेन करने के लिए इतनी नहीं, कम वैल्यू की जरूरत है। एनेस्थेटिक ड्रग्स बहुत कॉस्टली भी होती हैं, उनका बचाव करना अगर देखें जाए वो भी हमारे लिए एक फायदा है, वो भी पेशेंट को हम कह सकते हैं कि यस कम पैसों में सर्जरी हुई। तो सिमिलरली ये देखिए, ये इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया और इस इंडेक्स की मदद से ये देख पाए कि पेशेंट को इस टाइम कितनी ड्रग चाहिए कि वो एक डिजायर्ड इंडेक्स के ऊपर आ सके। तो ये कुछ प्रयास जो हुए वो डॉक्टर्स की हेल्प के लिए हुए। कुछ इमेजेस हैं जो आप देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में यूज किए। ये प्रैक्टिसेस थी एनेस्थीसिया के लिए। अब कुछ ऐसा है कि प्रोस्थेटिक्स में बायोसिग्नल का यूज कैसे किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा है, अराउंड 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें से भी अप्रोक्सीमेट 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो लिम्ब एम्पुटेशन की वजह से परेशान है। अब एम रिहेबिलिटेशन का होता है कि उन्हें प्रॉपर डिवाइस दिया जाए, रिहेबिलिटेशन डिवाइस, लेकिन कारण क्या है कि या तो वो डिवाइस अवेलेबल ही नहीं है या उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, पेशेंट को नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो हमारे इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सोचा गया कि क्यों ना प्रोस्थेटिक एरिया पे काम किया जाए। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप देखें, 4 तरह की डिसेबिलिटी में है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, डिसेबिलिटी बाय विजन और डिसेबिलिटी बाय हियरिंग। तो हमने अपर और लोअर दोनों बॉडी पे डिसेबिलिटी पे काम किया। तो अपर बॉडी डिसेबिलिटी में 2 तरह की मेन डिसेबिलिटी आती हैं, जैसे बिलो एल्बो एम्पुटेशन, जिसका हाथ कट गया है किसी कारण से, एक्सीडेंट से, और बिलो एल्बो एम्पुटेशंस। ये मार्केट में डिवाइस अवेलेबल हैं जो मिलते हैं, आर्टिफिशियल डिवाइसेस, पैसिव प्रोसेसेस है, बॉडी पावर्ड आर्म है, इलेक्ट्रिक आर्म है जो स्विचेस से चलती है। बट इनमें कारण क्या था कि जो पैसिव है वो तो बिल्कुल काम करती ही नहीं, सिर्फ दिखती है। जो बॉडी पावर्ड आर्म है वो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट ऐसे से करता है और उसका हाथ बंद और खुलता है। इलेक्ट्रिक आर्म है जिसमें 2 स्विचेस लगा के मोटर को कंट्रोल करके ऐसे, उसका हाथ पहले ही नहीं है और दूसरा हाथ भी बिजी हो गया। तो सोचा गया कि जो इलेक्ट्रोमायोग्राम सिग्नल है जो मसल्स के मूवमेंट से चलता है, आता है, हमारे जो पेशेंट के हाथ कट गए हैं बट मसल्स उसकी अभी भी हैं, जो पेशेंट का हाथ कट गया है अगर वो ये फील करे कि मैं हाथ को खोल रहा हूँ या बंद हो रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मसल्स वही वाली काम करेंगे। तो उन मसल्स के सिग्नल्स को लेके देखा गया, कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कैसे है, क्या फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं। तो उसके बेसिस पे एक प्रोस्थेटिक हैंड डेवलप किया गया
जिससे मान लीजिए पेशेंट को 2 मूवमेंट दिए गए कि एक पेशेंट अगर हाथ इस तरह से करता है और इस तरह से करता है तो ये बेसिकली अपर एंड दिस लोअर, ये मसल्स हमारे प्रॉपर काम करते हैं। तो इनसे सिग्नल लेके 2 इलेक्ट्रोड से सिग्नल लेकर के एक मोटर को एक्चुएट कराया गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे आगे फर्दर एक रोबोटिक हैंड चलाया गया जो पेशेंट्स को कुछ उठाने में, कुछ सिंपल काम करने में हेल्प करता है। अब समस्या ये आई कि इलेक्ट्रोड्स, अब पेशेंट डेली निडल तो नहीं लगा सकता, और जनरली इलेक्ट्रोड्स जो हैं आप देखा भी होगा, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोड जो भी होंगे वो एक जेली लगाना उन पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब वो डेली जेली भी नहीं लगा सकता, पेशेंट को तो यूज एंड थ्रो चीज़ चाहिए, यूज इट एंड थ्रो इट। तो उसके लिए फिर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड डेवलप किया CSI में, जिसमें कोई जेली लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट दिस एक्टिव इलेक्ट्रोड को यहाँ हम लगाएंगे या कहीं पर भी बॉडी के मसल्स पे लगाएंगे एंड EMG सिग्नल रेडीली अवेलेबल होगा विदाउट एनी जेली। तो ये माइलेट्रिक आर्म के अंदर फिट किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मैकेनिकल डिजाइन पे बात आई। अब मैकेनिकल डिजाइन, अगर मान लीजिए मेरा एक ह्यूमन हैंड जो है उसका एवरेज वेट 900 ग्राम से 1.2 kg तक होता है, और उसको अगर 2 किलो का हाथ लगा दिया जाए तो उसका बैलेंस वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक देखा गया कि उसके हाथ जो आर्टिफिशियल हैंड है उसका वेट उतना ही हो अप्रोक्सीमेटली जितना उसके दूसरे हाथ का है। तो उसके लिए अलग अलग तरह के डिज़ाइंस निकाले गए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब देखा गया। और एक डिज़ाइन जो ऐसा है, जो एम्स न्यू दिल्ली, IIT दिल्ली में जब मैं काम कर रहा था, और NIH कोलकाता जो इंस्टीट्यूट है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की, वहाँ काम किया, तो ये डिज़ाइन एक फाइनल पास हुआ। वो हाथ अगर ऐसे लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो उसको एक कॉस्मेटिक लुक देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्लव्स जो है ये साथ में बनाया गया, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, जो ग्लव्स बिल्कुल नियर नेचुरल दिखता है। इसके ऊपर एक और ग्लव्स होता है जो बिल्कुल, इस पे हेयर्स भी होते हैं। तो फाइनली एक आर्म बन के हाथ में आई, जो एक, हाँ, जैसे हम आज मोबाइल यूज करते हैं वैसे पेशेंट यूज करता है। जस्ट पेशेंट को फिट कर दी जाती है, सॉकेट जो है पेशेंट के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, जो आर्म पेशेंट के EMG सिग्नल्स को यूज करके ओपन और क्लोज करती है हाथ को। साथ में पेशेंट कितना जोर लगा रहा है उस हिसाब से मोटर की टॉर्क को कंट्रोल करके ग्रिप को कंट्रोल करती है। लाइक इस बोतल को पकड़ने के लिए मुझे कम ग्रिप चाहिए, एक अंडे को पकड़ने के लिए मुझे और कम चाहिए, थर्मोकोल को ग्लास पकड़ने के लिए और कम चाहिए, और एक 2 किलो का वेट उठाऊंगा तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये कंट्रोल कर सकता था पेशेंट। अगर आप खुद भी देखेंगे, एक हल्के सब्जेक्ट को, किसी भी हल्के पार्ट को पकड़ने के लिए कम फोर्स चाहिए। हमें विजुअल फीडबैक भी है। एक नॉर्मल इंसान को सेंस है, वो उंगलियों से सेंस कर सकता है, बट एक प्रोस्थेटिक जब लगा दी जाती है किसी पेशेंट को, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये कितना, कोई सेंसेशन नहीं है, लेकिन वो आंखों से देख सकता है कि ये वेट कितना होगा और मुझे कितना जोर लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंगली जोर लगा करके वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। दैट ट्रायल वी हैव डन विद द पेशेंट्स। अब समस्या पेशेंट से डॉक्टर्स पे आ गई कि जब इस आर्म को फिट किया जाए तो इलेक्ट्रोड लगाए कहाँ जाए, यहाँ लगाए जाएं, यहाँ लगाए जाएं, यहाँ लगाए जाएं। तो उसके लिए फिर समस्या आई कि ये इलेक्ट्रोड कहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्टिमम लोकेशन का पता लगाया जाए। अब सब पेशेंट्स की मसल एक जगह तो नहीं हो सकती, मीन्स थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंजेस होंगे, बट ऑप्टिमम सिग्नल कहाँ से आएगा उसके लिए पता लगाने के लिए ये मायो ट्रेनर डेवलप किया गया। इसमें वही इलेक्ट्रोड्स हैं जो पेशेंट के आर्म में लगाए जाते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रोड से ये निकाला गया कि जब इलेक्ट्रोड यहाँ लगाए जाते हैं तो सिग्नल की कैपेसिटी कितनी है, जब यहाँ लगाए जाते हैं तो सिग्नल कैपेसिटी कितनी है। तो एक तो इससे ये पता लग जा गया कि पेशेंट को इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाए जाए। दूसरा, पेशेंट को जब आर्म इनिशियली दे दी जाती है तो उसे खिलौने की तरह यूज करता है, खराब भी हो जाती है, हमारी हुई। तो उसको आर्म लगाने से पहले ये मायो ट्रेनर दे दिया गया कि इसके साथ खेलो। जब इससे पूरा ट्रेंड हो जाओगे कि मेरे को ओपन के लिए सिग्नल करना है, क्लोज के लिए सिग्नल करना है, तब आर्म लगाई जाएगी। तो ये मायो ट्रेनर इसलिए इजाद किया गया। इसमें आप देख सकते हैं ये LED वर्जन है, इसमें लेफ्ट और राइट 2 बेसिकली बार हैं। ओपन और क्लोज के लिए वो बार ज़्यादा चलता है जिसमें सिग्नल ज़्यादा होता है, और वहीं से पता लगाया जाता है कि कहाँ पे मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है जहाँ से सिग्नल लिया जा सके। इसी को ही एक डिजिटल डोमेन में भी निकाला गया, जिसके अंदर वो डॉक्टर जो है सिग्नल को रिकॉर्ड करके लेटर ऑन एनालिसिस भी कर सकता है, बट फंक्शन रिमेल्स सेम। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आर्म कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके फिर पेशेंट को एलिम्को में जाके
लगाई गई। देखिए ये बिलो अबव एल्बो आर्म दोनों जो है पेशेंट्स को फिट किए गए। बिलो एल्बो में इलेक्ट्रोड्स यहाँ लगाए गए, अबव एल्बो में यहाँ लगाए गए, जिससे पेशेंट को ट्रेन किया गया कि आप इस तरह से अब मूवमेंट्स कीजिए ताकि आपके EMG सिग्नल्स आपके हैंड्स को ओपन और क्लोज कर सकें। फिर लोअर डिसेबिलिटी पे काम किया गया। इसमें भी बिलो द नी अबव द नी प्रॉब्लम्स हैं और आर्टिफिशियल डिवाइसेस जो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं। बट इनमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूमेटिक नी है, कोई आर्टिफिशियल लेग है, जब पेशेंट चलता है तो जर्क आता है। तो उस जर्क इसलिए आता है कि आर्टिफिशियल लेग और ओरिजिनल लेग्स के अंदर तालमेल नहीं है। तो उस तालमेल को बिठाने के लिए पेशेंट के ओरिजिनल लेग्स से सिग्नल ले करके और पेशेंट की जो आर्टिफिशियल लेग्स है उनके पैरामीटर्स को कंट्रोल किया गया है। जैसे एंगल कितना है, सिग्नल कितना आ रहा था, हील कब स्ट्राइक हुई, टो कब स्ट्राइक हुई, तो जब उससे कंट्रोल किया तो काफी हद तक जो तालमेल है वो मिल गया और जर्क खत्म हुआ। अब बारी आई कि कुछ एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको कैसे हेल्प की जाए। वो पेशेंट जो जनरली कुछ डिसीज लाइक क्वाड्रोप्लेजिया, जिसमें वो खाली नेक मूव कर सकते हैं या ओनली फिंगर्स मूव कर सकते हैं, हैंड भी मूव नहीं होता, तो उनके लिए कुछ मोबिलिटी सॉल्यूशंस के बारे में सोचा जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन कि जॉयस्टिक बेस्ड चेयर तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो जॉयस्टिक तो ऑपरेट नहीं कर सकते ना, कर ही नहीं पाते। तो क्या फिंगर ऑपरेट करके वो व्हील चेयर को चला सकते हैं? तो बेसिकली उस जॉयस्टिक को नॉर्मली इस मैकेनिकल सिग्नल की वजह से हमने टच जॉयस्टिक में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जस्ट फिंगर रखते ही वो, जैसे हम अपने संजीव कुमार रनिंग टॉप जस्ट जैसे हम माउस पैड यूज करते हैं उसी तरह से वो पूरी व्हीलचेयर को ऑपरेट कर सकता है। सिमिलरली यू कैन सी दिस टच बेड गेस्चर कंट्रोल व्हीलचेयर। फिर मान लीजिए वो उंगली भी नहीं हिला पाता, ओनली गर्दन ही हिला सकता है, तो उस गर्दन से देखिए अब आप इस तरह से कुछ हमारे जो बायोमार्कर्स हैं उनसे पेशेंट की नेक को आइडेंटिफाई किया गया कि व्हीलचेयर को किधर चलाना चाहता है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। तो इस बेसिस पे एक व्हीलचेयर ऐसी लगाई गई जिसके सामने कैमरा लगा करके, दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप, कैमरा लगा करके उसके नेक के मोशन को कंट्रोल करके ये दिखाया जा सकता है और किया जा सकता है कि जो व्हीलचेयर है किस साइड में डायरेक्शन में जाएगी। दैट कंट्रोल हैज बीन जनरेटेड। अनदर कि वो पेशेंट जो खड़े नहीं हो पाते, क्या हम उन्हें एक एक्सोस्केलेटन टाइप सूट प्रोवाइड कर सकते हैं? वो खड़े होने की कोशिश तो करते हैं लेकिन EMG सिग्नल कम होने की वजह से नहीं हो पाते, मसल सिग्नल स्ट्रेंथ कम होने का। तो उस EMG सिग्नल को डिटेक्ट करके एक एक्सोस्केलेटन सूट जैसा बनाया है जो पेशेंट को जस्ट खड़ा होने या स्लो स्पीड पे चलने के लिए हेल्प करता है या बैठ जाने के लिए। अनदर हम सबकी एक प्रॉब्लम है कि हमारा पोस्चर अच्छा है या नहीं, हम इस टाइम पे बैठे हैं कि हम सही पोस्चर में बैठे हैं या नहीं, तो हमारे पोस्चर का एक बैलेंस है। तो वो बेसिकली फीट पे अगर आप देखें कुछ इलेक्ट्रोड लगा करके बैलेंस को निकाला गया और उस बैलेंस से ये पता लगाएगा कि हम सही पोजीशन में बैठे हैं या नहीं, ताकि हमें आने वाले टाइम पे कोई और प्रॉब्लम ना हो सके। कुछ एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदा के लिए भी काम कर रहा था मैं, तो आयुर्वेदा के अंदर देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि एंशिएंट डायग्नोस्टिक अप्रोचेस में ये जो बॉडी के सिग्नल जैसे हम कहें पल्स, यूरिन, टंग, वॉइस, आइस, टच, इनसे पता लगाया जा सकता है कि क्या डिसीज है, किस तरह की है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि क्या हम कुछ नॉन इन्वेजिव मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके कारण हम ये पता लगा सके कि हाँ कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप देखें कि एक छोटा सा एक डिवाइस जो वैद्य की 3 फिंगर्स को मिमिक करते हुए रिकॉर्ड करता है वात, पित्त एंड कफ, और उस रिकॉर्डिंग के साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वात, पित्त और कफ बैलेंस में है या नहीं है, और इस टाइम अगर कोई भी ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या है वो तो सिर्फ डॉक्टर से बता सके, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम डॉक्टर्स को ये बता सकें कि इस टाइम पेशेंट की स्टेट ये है। साथ में नोस्ट्रिल बिहेवियर के लिए कि कौन सा नोस्ट्रिल हमारा लेफ्ट या राइट इस टाइम चल रहा है और उस टाइम पर रेस्पिरेशन कितना आ रहा है और उस टाइम एक्सेलेटर का टेम्परेचर कितना आ रहा है, इस तरह से। या आंखों का कलर क्या है, जीभ का प्रॉपर कलर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारे वैद्य लोग हैं जो हैं उनको मदद जरूर करेगा। ये कुछ रिकॉर्डिंग से जो हमने यहाँ पे पतंजलि में ही काम किया था काफ़ी पहले, तो अभी भी ये काम चल रहा है जिससे हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल आर्टरी सिग्नल, दैट इज वात, पित्त, कफ।
इससे हमने ये निकाला कि जॉन्डिस लेवल आंखों से ये कितना पता लगाया कि जे काउंट नंबर दिया कि जॉन्डिस का लेवल कितना है आंखों के कलर से। दैट वाज ऑल अबाउट द सिग्नल्स। हमने देखा होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं सिग्नल्स को देखते हुए करते हैं कि सिग्नल्स हमें किस तरह से बताते हैं कि क्या बीमारी है, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हेल्थ केयर इज बेसिकली अ ग्लोबल इशू एंड मच रिमेन्स दैट वी हैव टू डू। वी हैव जस्ट एडेड डाल्टा। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Sanjeev Kumar. It was a fantastic oration and we really enjoyed it. Yeah, it is a new direction for Ayurvedic people to see this new era of technology application on human biosignals. And you really gave very clear vision of bioelectric signals, bioacoustic signals, biomechanical, biochemical, biooptic and bioimpedance. Lovely, this is a really great. All the biomedical systems work on this messages or signals given by the body. And we appreciate the anesthesias, what you are told of amnesia, hypnosis, analgesia, etc. Real-time hypnosis is really fantastic. And EEG index, that is 100, what you are told, the normal awake level, and the surgical zone 40 to 50 is a new message for all Ayurvedic people, I'm sure. And the pain of no pain, medium pain, pain level measurement during the surgery, etc. is also a very good information for us. And disabilities and artificial limbs, myoelectric arm and myo trainer, myo gesture based control and postural stability assessment and pulse instrumentation, jaundice detection is fantastic, very excellent information for us. And I feel such a good information, short time, it is very difficult for Ayurvedic people to get this one. And it is a new direction for us to really think on this biomedical science. And so many things are there still from Ayurvedic side to understand from your side. We appreciate your great work. One question from you, sir, finally. Thank you. Yeah, one question. When you take the limb, artificial limb, the metal that you use, is any specification you have anything? Yeah. Normally, sir, biocompatible material is titanium. But with prosthetic, it is difficult to machine that titanium. Yeah, I just got information. DRDL, the Defense Research Laboratories, they specially worked on this metal that is to be used in this, especially in artificial instrumentation for low weight. And our previous Abdul Kalam, who worked in Hyderabad level, he has made this work on this. So I appreciate for your work. Normally, for the low coat, that aluminum we are using, but one material that is known as black carbon, that is also being used. But the thing is that if we can produce the strength in that carbon, that material, that can be a very useful material for this prosthetic development. Low weight and strong. Yeah. Yes, I appreciate. And any questions, please? I do not stop your enthusiasm. You can have any questions, one or two, please. Because everybody is feeling hungry, we have to close the session. Any questions? Okay, fine, excellent. There are no questions. Give a big applause to Dr. Sanjeev Kumar, please. Once again, a huge round of applause for all of our splendid speakers. Now, I request our session chairs to please conclude the session. Sir, before conclusion, I just had one question. Sir, before conclusion, I had one question to sir. There is one question from Sanjeev sir. Yes, yes. Sanjeev sir, there is one question for you. So, for testing our internal system, we have this X-rays being done. And we all know that X-ray has got the harmful effects on us. What is your opinion, sir, as an engineer? Because even I am an engineer and would want to know what is your takeaway? Like, can there be a more side effect free testing way in comparison to X-rays? Or any laser treatments which have been, laser scanning treatments which have been done, even MRI for that matter, it has its own radiations, magnetic radiations which have got harmful effects, which we know as an engineers how harmful they are, sir. Thank you so much. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। एक्सरे जब किया जाता है बेसिकली तो एक कंट्रोल्ड डोज पे किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर एक पेशेंट को मल्टीपल टाइम एक्सरे किया जाए तो वो हार्मफुल हो सकता है। हमें कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि डोजेस को कम करके, डोजेस के लेवल को कम करके अगर एक्सरे की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है थ्रू आज की साइंस जो है इमेज प्रोसेसिंग, उस तरह से कुछ काम कर रहे हैं। अब एक्चुअली एक्सरे लेना है तो लेना है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरे की डोज कम करके सिमिलर रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, उस चीज़ पे काम किया जा रहा है।
और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे है और सीटी है, एमआरआई अलग तरह से एक रिजल्ट देता है, सीटी अलग तरह से देता है, तो हम दोनों को कंबाइंड करके अगर एक पेशेंट का एमआरआई और सीटी मान लीजिए हुआ है, बहुत मुश्किल है वैसे कि दोनों सेम टाइम पे हुए हों, दोनों को कंपोज करके एक अलग से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, कुछ हार्ड टिश्यूज की, उसको सॉफ्ट टिश्यू की, एक ही टाइम पे। तो उस तरह का कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Much appreciated. Thank you once again, Sanjeev sir, for illuminating us regarding this question. My again request to our session chairs to please conclude the session. Yeah, thank you for this opportunity, and most of them I've done in the past, and but again still I wanted to recap everything. And Dr. Sachin Deshpande's talk on surgical art, philosophy and technology, and putting them encapsulated way as a holistic health is a fantastic way of new direction for this surgery with that of the humanity and Homo sapien feelings. He has really talked upon the anatomy and integrity, and as well as he spoke regarding the Prasanatmendra Manaha during the surgery, and he has given the examples of the technology of bypass surgery, transplantation, knee replacement, etc. And we really appreciate his work. Give a big applause to him, please. Yeah. The next speaker is Murli Krishnan. Murli Krishnan Dhanashekaran is from, he spoke from Atlanta, from USA, regarding the cannabis, that especially he removed the stigma of cannabis in the Indian society by really opening the important values of its therapeutic, cosmetics, recreational, and as well as future health care. He spoke regarding the addiction, dependence, and toxicity and death with cannabis, and the substances of abuse, and he spoke regarding the importance of its cannabis in civilization, religion, and in the society. The non-toxic effects, he very clearly emphasized on CBD, that is cannabidiol, with that of the tetrahydrocannabinol, and its effects on human physiology and as well as pathology. And the medical aspect of this cannabidiol, especially migraine, pain, and glaucoma, he spoke. And then he has spoke regarding the endocannabinoids, synthetic cannabinoids and phytocannabinoids, and as a bliss molecule. He also give the importance in the recreation, spiritual, and as well as the commercial aspect of cannabis, plain really well. The last and final important thing what he has given is regarding the use in B-cell lymphoma, that is for cancer. And we please give him a big applause, though he is not present here, please. Yeah. Lastly, in the second but last, Dr. Sachin Gupta, the great surgeon of Patanjali, has really spoke all the aspects of proctological, especially emphasized upon the Kshara Sutra application and preparation of the Kshara Sutra, then hemorrhoids and hemorrhoid trans-hemorrhoidal plexi and different techniques used with the laser treatments, and his treatment especially for the fistulas, fissure in ano, pyloral sinus is really great. We have enjoyed the video and surgical procedures, and especially has taken us to the operation theatre without creating operation theatre here. Then lastly he said the generating the generation is great philosophy of his talk. So thank you so much, Dr. Sachin Gupta ji. And last the speaker is Sanjeev Kumar ji, has already spoke them regarding the biosignals and this anesthesia and as well as EEG index, then the pain condition, how to really, what is different pain conditions, and EEG index he spoke about the awake level of EEG condition is 100, which we not know, and the 40 to 50 is a surgical zone where it is maintained by anesthetists, and he has taken us through the glimpse of really the artificial world, by how biotechnology is applied, and especially in artificial limbs, myoelectric arms, myo trainers, and head gesture based this control system of moving the disabled vehicles is really fantastic. I think whether it's coming to India or not, I do not know. And the postural stability assessment, pulse instrumentation is very important for Ayurveda, and to what extent is applicable we do not know. We still need some experimentation on that. And the jaundice detection method, what he has spoke is really lovely. So with all this, we had a wonderful session of this morning with so much information and so much new way, new direction, new technology for Ayurvedic people. I really appreciate the organizers who have put such a great speakers in this session. We sincerely appreciate them for the great choosing such a good speakers for us. Thank you so much. Thanks for organizing. Thanks for Patanjali. Thank you, sir. My request to Jay Balan, sir, to further enlighten us regarding the same. Yeah. Thank you for giving me this opportunity, Dr. Ved Priya, Swami ji and Acharya ji. Actually, there are four diverse topics are
deliberated today in the morning. But looking into that on the outset, it will be like different zoners. But there is one line, I think in my mind it comes again and again. There is one thing which connects at any point, that all the four lectures, one doctor is worrying about the patient's pain. The other is saying about the other surgery procedures. And the biomedical engineer comes, he says that EEG can be used as a tool for analyzing the pain and sleep, what you can say, the level of sleep or hypnosis that the patient gets when the drugs are given. So it all are connected, and one man was talking about the traditional drug that what you call as cannabis. So we can have a long study in this Patanjali Ayurveda research with that we can connect all these people to have some good results and good procedures, good drugs. Suppose if Ayurveda is many places looking into many lifestyle diseases, you can take into consideration this communicable and infectious diseases also, and you can work on it. New drugs, because of this increasing antimicrobial drug resistance, we can look into that also for making new drugs in Ayurvedic domain, so that the holistic approach of providing health care will be glorious in the future by the support and hard work of this Patanjali. So once again I thank the organizers for giving me this opportunity, and thank you ma'am, and thank you the Almighty for this. Thank you, sir. Please give a huge round of applause to our session chairs. Now, my request to Dr. Sachin Deshpande sir, Dr. Sachin Gupta ji, and Dr. Sanjeev Kumar sir to please come on the stage for felicitation ceremony. Please welcome them with a huge round of applause. Now, my request to our session chairs to present a memento to our speakers as a piece of memory from our institution. Please keep applauding for our wonderful speakers. Please keep applauding for our speakers. It's an honor for us to have such immense personalities today with us. My again request to our audiences to please keep applauding for our wonderful speakers of the day. Please give a huge round of applause for Sachin sir. We are once again thankful to our splendid speakers. Now, my request to Dr. Vedpriya Madam and Dr. Anurag Srivastav sir to please come on the stage to felicitate our session chairs. My request to sir and madam to please come on the stage. Please welcome our dignitaries with a huge round of applause. Please keep applauding for our session chairs. Thank you once again, sir and madam. Now you all must be hungry, right? Not hungry? So somebody said yes for not being hungry. Is it true? So it's time for lunch. So lunch is waiting for all of you in the university mess.
So it's my request to all of you, please have your lunch and come fast. We'll be starting our next technical session by 3 p.m. It's my request to all of you, please be back in the auditorium by 3 p.m. Thank you once again.